Before I invite the experts to the platform, let me introduce the topic to all the participants and the panelists here. Uh, Social and emotional learning, it is a process that, through which individuals of all ages, they can develop skills and attitudes to understand and manage their emotions better, set and achieve goals, feel and show empathy for others, and establish positive relationships and make responsible decisions. Social and emotional learning is also recognized as a fundamental aspect of education that supports the holistic development of an individual and prepares them for better outcomes in school, work, and later in life. It has been associated with multiple positive outcomes, such as improved academic performance, more social competence, better emotional intelligence, enhanced well-being, and it reduces behavioral problems as well. And when we talk about social and emotional learning in the context of disasters, it can play a crucial role in supporting children in emergencies and post, the time of crisis during rehabilitation and reconstruction and help in their recovery. How can they do that? They can Social and emotional learning can help in emotional regulation. After a disaster, in that chaos, emotions also go through a process of chaos. Children, they suffer from trauma. So this learning, this technique, social and emotional learning can be used as a technique to regulate their emotions such as fear, anxiety, sadness. It can help foster empathy and compassion towards not only towards others but towards one's own self. Then help in better communication, help in communicating their needs. Children, we have seen that are not able to communicate their needs properly, so social and emotional learning can help them in there. Then help them in problem solving, both individually as well as in a group, and it makes them more equipped to navigate relationships better while they're in the crisis, and build better interpersonal relationships in the aftermath. So social and emotional learning can be a great tool for children during disasters, and it can also act as a therapeutic intervention for the children in that very, very difficult time. So with this, I open the platform to our expert panelists, and we start the inaugural session of the day. And for inaugural session, may I please invite Dr. Kumar Raka, who is the Senior Program Officer of Child-Centric Disaster Risk Reduction Center of NIDM, and he has been instrumental in starting this webinar series and guiding us to continue this series. And it has almost been 1 year that we have been doing this series, and Sir has been instrumental in starting and continuing this series. So over to you, Dr. Raka, and may I please request you to deliver the opening remarks of the program today. Thank you Over very to much, you. Dolphy. Thanks a lot. First of all, on behalf of National Institute of Disaster Management, Child-Centric Disaster Risk Reduction Center, I would convey my heartfelt thanks and gratitude to our Executive Director, Sri Rajendra Ratnu, and also our Project Director, Professor Santosh Kumar. Today's esteemed speakers. Ms. Dolphy, I'm not, no, you're not audible. No, I think. Can anyone else find it out? I'm audible or not? You are audible, sir. Please go ahead. You are audible. So also I would like to convey my heartfelt thanks to our esteemed speakers today, Dr. Mudassir Hassan and Ramesh Sudan, Dr. Sahin Ansari, the entire team of CRI, Dolphy Raman and Subhendu Bhattacharji, our own team, Dr. Balu, Ranjanji, Najia, everyone who is who was very active, still very active behind organizing this wonderful webinar on very important topic.
I would also convey my heartfelt thanks to Bal Raksha Bharat for providing their continuous support to CCDRR Center of NIDM. Actually, today's topic, what we, Dolphy already set up the tone, and I can see that social and emotional learning, when we are talking about, in my understanding, that is the very, very basic management technique of a holistic child development and growth, where there are some self-disciplined actions are at the center. Like Dolphy already told that there are three very important things when we are talking about SEL, social and emotional learning. Self-awareness is the first thing. Self-control is the second thing. And the third thing is the interpersonal skills. And I'm also a mental health expert, you can say. So when I was going through this entire topic and I was just thinking of all these components, then I could easily relate it with the mental health conditions. That is also somewhere what is mental health when we are talking about, we are discussing about. We used to discuss this is just to give the child all the orientation, all the help, all the direction, all the guidance so that they can learn healthy life skills in the future. And same is here into the self-awareness is the five components like the previous speaker told, the self-awareness, self-management, social awareness. There are two types of awareness we are talking about. So self-awareness is one thing. Until unless we are having the knowledge of our own emotions, it's always very difficult to that we will come up with a positive self-concept. So self-awareness is at the center. And once we understood ourselves, then the social awareness is directly related with it. The ability to have awareness of the emotions and the social situations of the others. Until unless our self-awareness is not, if we are not aware about our emotions, our situations, it's always very difficult for us that we are not in a particular set of peace of mindset so that we can understand others' awareness, social awareness or situations. The same is with the self-management. Self-management, rightly I told that this is again one of the very basic concept. Its ability to regulate our own emotions and monitor our own behavior. And until unless this is done, regulating our emotions and monitoring our behavior, uh, it will always be very, very important for the motivating us and setting our personal goals in the life. After that, if we are understanding self-awareness, social awareness, and after that self-management, then comes the relationship skills. We used to say man is a social animal. No one likes to live in the isolation. Since our very childhood, when the child is growing, the first friends are parents or family members, and after that, along with the life cycle approach of the child find out relating with others. Some with the school friends, Anganwadi friends, and after that, a wider worldview, a lot of people interacting with them. So here, along with all these three things, the relationship skill is very, very important. How to foster relationship with others and how to communicate with those relations, continuation of communication with those relations in a positive manner. And for that, for all these four components, a responsible decision making is very, very important. And that responsible decision making, when we are talking about, it's almost like ability of solving the problems and holding ourselves accountable for our decisions. Okay, it's not something has happened like an accident taken place on the road, and after that the driver is telling that no, this is not my fault, this is others fault. So that is not a responsible decision making, understanding that okay, this was my fault. So these five components are very, very important. And until unless the children start learning this
social and emotional learning skills from the very early age. Disaster and emergency situation where there is a situation of uncertainty, chaos, disorganization, a ill-informed adult or children will always find more problems compared to a child or an adult who has been trained with social and emotional learning. That is as simple as that. And not only disaster and emergency situation, in our day-to-day life also, see, we have to see the life cycle approach of a child, how it grows and how it becomes an adolescent, and after that youth, and after that an adult, and after that an you can say senior citizen, or like that. So at each stage, all these decisions, all this very, very important, how to connect with the rest of the system, the neighborhood, the communities, and at the professional level also. See, children, after that school, and after that job. So jobs also today are asking for this social and emotional learning. Until unless you are a team player, you are not welcome. Until unless you are a problem solver, there are less chances that you will go through pass through an interview. Relationship skills, decision making, and after that, for being a perfect leader, self management is very, very important, and self awareness and social awareness is also very, very important. So this is a critical topic, and it will be very, very interesting to hear today's speakers on that. And I think the speakers will also agree that SEL has a very, very positive impact on the mental well-being of the kids. And if provided at the early age, I'll not go through like that before the age of 14 or 16 or 13. No, but at the early age, then there are chances that the child will grow up with a very, very sound mental health conditions. And very sound, very perfect mental health conditions means the child is going to be a perfect citizen, a resilient citizen, a well prepared citizen in the times of disasters and any kind of emergencies. So, along with that, once again, I'll thank you all the organizers here, and especially the speakers, and of course, our beautiful participants present here on the platform. Thank you, everyone. Thank you very much. I'll be with you, and I'll be listening to the speakers. And after that, again, I'll join during the questions and answers our session. Thank you. Over to you, Dolphy. Thank you so much, Dr. Aka, and thank you for connecting it so beautifully with mental health and psychosocial care during disasters, and how it is so important. The social emotional learning is so important for them to navigate the challenges of that the emergencies throw in their way. So, with this now, we had a very important speaker, Dr. Santosh Kumar, but he is currently occupied in some very important work. So, if there is time, he would be joining us later. So, right now, we would not be able to hear from him. So, we would move on to our next special guest of the day. And he is Vice Principal, District Institute of Education and Training, Baramulla, Kashmir, Shri Ghulam Ahmed Mir, and he's present with us and will be delivering special address. And as they are an important collaborator for this webinar. So, Ghulam sir, over to you. Can you hear me? Thank you. All the praise and thanks are due to Allah Almighty, All-Knowing. Distinguished Executive Director, National Institute of Disaster Management, Ministry of Home Affairs, Government of India, Shri Rajendra Ratnu. Dignitaries of Child-Centric Disaster Risk Reduction Center, Dr. Kumar Aka and Ms. Dolphy Raman. Dr. Balu, Clinical Psychologist, GMC Baramulla, Dr. Mudassir Hassan, Coordinator from Diet Sopur Baramulla, Sardar Ramiz Ahmad Sudan, most respectable participants, excellencies, ladies and gentlemen. Immense pleasure for me to welcome you all on behalf of my entire Diet faculty to this worthwhile webinar on social and emotional learning for children
in disaster and emergencies. Disaster management is a science and a system created to reduce vulnerability of hazards and cope with disasters. Disasters threaten the lives, constitutional rights, and needs of children and women worldwide. In past few decades, Jammu and Kashmir faced devastating disasters such as earthquake 2005, flood 2014, and COVID-19. Such disasters adversely affect the children and women. During these emergencies, children are most susceptible to hazards, especially diseases, malnutrition, violence, and trafficking. Keeping in view the vulnerability of children from climate change and natural disasters, National Institute of Disaster Management NIDM, Ministry of Home Affairs, Government of India has established Child-Centric Disaster Risk Reduction Center. Social development refers to a child's ability to create and sustain meaningful relationship with other children and adults. And emotional development is a child's ability to express, recognize, and managing his or her emotions and as well respond to other emotions. Emotions like sadness, happiness, fear, anger, surprise, and disgust. And we as teachers, masters, have to share the sense of responsibility. Respected teaching fraternity, now the schools are reopened after winter break and exams have started. It is obvious when exams arrive, students become extremely worried and tense about how to study, how to perform better and get good grades, and how to have easy access in examination centers, and a fear of failure in exams. This mental trauma or disorder in most of the school going children is known as exam phobia, which may develop the symptoms like headache, nausea, excessive sweating, shortness of breath, rapid heartbeat, feeling faint, etc. It is our duty and responsibility to get them out of fear or failure and make it a sense of enjoying. It is pertinent to mention here that Diet Baramulla have already sensitized about 2,000 teachers, masters in school safety component trainings. For that, we are highly thankful to NDRF teams and medical counselors. Now it is time to sensitize one and all through webinar portal, and with good wishes, I, Ghulam Ahmed Mir, Vice Principal, Diet Baramulla, declare this session open. Thank you. Thank you so much, sir, and thank you for giving the vulnerability setting of Kashmir, and with respect to the not only the natural hazards but also the human-induced disasters. And thank you for setting the context in the geographical location of Kashmir. Thank you so much. And now with this, I think we should go ahead with our technical session. So with this, may I now please invite our first speaker? Sahin Bhai is also here. Please provide him on the platform. डॉल पे साइन सर को इनवाइट करना था. Yes, sir. Yes. Right. So, may I please invite Dr. Shaheen Ansari, who is the Education and Emergency Specialist, Child Rights and You, to the platform to deliver his address for the participants. Over to you, Shaheen, sir. Thank you, Dolphy. Thank you, sir. I would like to thank Shri Narendra Modi, ED NIDM, Professor Santosh Kumar, Dr. Ghulam Ahmed Mir Sahab, Dr. Kumar Raka, Ranjan ji, and of course, Bal Lakshat Bharat, that is Save the Children. So thank you very much for inviting this. It's a very important, subject, especially from children points of view. So what we understand already, Dr. Raka has shared important thing.
So it is very important to understand what is social and emotional learning. And we are some also calls it emotional intelligence. So to understand this, this is an ability. SEL, yeah, social emotional learning is an ability for three things. One, to understand, to use and manage your own emotions. And what are emotions? Emotion like anger. There are lots of emotion. If you recall around you, you can see happy, scared, bored, angry, sad. These are worried. These are all emotions. So we have to understand the negative emotion and positive emotion, and we have to work. And so if there are negative emotions, it's very important to understand it, use it, and manage it in your positive way. And what will have to manage it will give you relief of stress, communicate effectively, empathize with others, overcome challenges. If you understand what are the emotions going inside you, you can overcome those challenges. Very important. And diffuse the conflict if there is something going on. These are very important. If you see those children who are going through negative kind of emotion, there is a uh, if there is low emotion and high emotion. High emotion means the positive emotion. Low emotion means negative emotion. So if the child grow with low emotion, he or she become aggressive, demanding, egoistic, bossy, and confrontational. Throughout the life, if her or his childhood grow with low emotional intelligence, he or she will become aggressive. And on the other way, if there is a positive emotion around her or him, then he or she will become assertive, ambitious, driving, strong-willed, decision-making. Powerful person to contribute to the society. So that's why it's very important to work on this. And I have seen that how it impact in the adult also. If you work on social emotional learning among your elder team member, it increase the team performance. Because you understand your emotion and your team's emotion, and you work accordingly. It decreases occupational stress also, because the boss, the leader, work according to the emotions he or she understand among his or her team. It improves decision making also, and that impact the overall impact of that team. So these things, to conclude it, I would like to emphasize how there are 4 5 things which we must understand. Of course, they are the expert on this, so they must be speaking. So I just like to there are 5 components on this, social emotional learning on which we should work on. Already, some of the already have been shared. I just repeat those things. First is self awareness. Know yourself. Then, if you know self management, how to manage those emotions. Social awareness. What are the people around you reacting? You should know, understand, and that leads to the relationship skill, and of course the decision making. So with this, I would like to thank Dolphy for this opportunity, and like to hear from the expert and learn from them. Thank you. Thank you so much, Shaheen sir, and thank you for also, bringing out the technical aspects of this topic. And I'm sure we'll be hearing from the speakers more on this. And thank you for introducing them to the platform. So now, should we go ahead with the technical sessions? Dr. Akash, Shaheen sir? Yes. Yes, Dolphy, go ahead with the Right. technical session. Thank you. Right, right. So with this, may I please invite Mr. Rameez Ahmed Sudan, Academic Officer, District Institute of Education and Trainings, Baramulla, Kashmir. And may I also state that Rameez sir has been continuously coordinating with us from the side of diet, and he is one of the reasons why we are present here, and he's helped us
conceptualize the entire webinar and bring the other speaker and in collaboration with us. Thank you so much for your contribution. And now we will also hear him as an expert on this topic. Now I invite Ramesh sir to the platform. Over to you, sir. I have given you the role of presenter. Please share your content. And yes, it's getting shared. And meanwhile, I request the Am I audible? participants at the yes, sir. Thank you so much. So I was sharing with the participants that they can enter their questions in the chat box, and we will take them up at the end of both our presentations. So request to the participants to send their questions to us in the chat box. Thank you, sir. And over to you, Ramesh, sir. Yeah, thank you so much, Ms. Dolphy. And first of all, I begin by thanking the Executive Director NIDM, Shri Rajendra Ratnuji, and our CCDR program, Senior Program Officer, Mr. Dr. Kumar Raka, sir, and then we have Dr. Balu, and we have Dr. Ansari, sir, also with us, and the whole team of NIDM and CCDR, DRR. I begin by really extending my good wishes on the beginning of the holy month of Ramadan to all of the participants, and may this month be a month of peace, of prosperity, and happiness, and this is what we are striving for during our session, in fact, which is on social emotional learning, and what a great beginning for this session, in fact, on two counts. One, that we have this holy month, and that really that really necessitates that we think of our emotions and how to calm down our minds and souls and prepare for the life ahead. So every year, this month comes up as a kind of a breather, as a kind of a vent to vent out the negativities and to vent out all the emotional upheaval that happened to us, and then we start the new year from here onwards fresh. And secondly, that as our Vice Principal, Mr. Ghulam Mir, has mentioned in the beginning, that we have our examinations calendar going on right now in Jammu and Kashmir, and this is the first time we have this session in the month of March. Earlier it was in the month of, it happened in the month of October, November, or December. So children are going back to their examination halls, and there's a kind of pressure, and there is kind of would be a kind of stress and strain on their minds, that how to go about exams. And so we will ensure during our discussion that we also bring up the aspect of examination related stress, because it also turns out to be a kind of a disaster, kind of distress for these children, and at times it takes the shape of emergencies as well. So I thank you all. I thank NIDM for really taking the lead, and taking Diet Baramulla also on board to organize this very important session. And let me begin by saying that I am not really an expert on the subject, but having been in the Department of Education and doing my independent research in the field of emergencies, so as a practitioner, somebody who's closely connected with children also has some kind of understanding about the subject, what we call it SEL, or social, emotional, and ethical learning also. So I begin by really thank you so much for giving me this chance, and I start off by yeah, is it visible, Ms. Dolphy? Yes, sir, we can see it, and we could also see the change in the PPT. So Yeah. we are And so here is how we really first begin by our classrooms and in our education system, and in each of my sessions at least, that how you should really begin about your day each day. So I want to really open up the floor for the participants to really tell me that, what you're seeing is a kind of a board, emotional board, which gives you
these emojis and these expressions in the form of the kind of range of expressions you have on your screen. So can you tell me, और मैं बीच बीच में थोड़ा सा उर्दू का भी इस्तेमाल करूंगा, उर्दू हिंदी का, so that बाकी जो हमारे एक bilingual participants होंगे जो दोनों लैंग्वेज शायद एक लैंग्वेज में उतना कंफर्टेबल ना हो, तो मैं उनके लिए कहूंगा कि आपके सामने एक बोर्ड है जो कि एक एजुकेशन में और हमारी नॉर्मल एजुकेशन प्रैक्टिस में वी यूज इट, एंड हम इसको एक SEL चेक इन करके कहते हैं कि दिस इज एन SEL चेक इन व्हेन यू बिगिन योर क्लास, व्हेन यू बिगिन योर डे इन द ऑफिस और इन योर सेटिंग्स. तो दिस इज हाउ यू शुड बिगिन, यू नो. तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो आपके इमोशंस हैं, इस वक्त आपकी इमोशंस इस सिचुएशन में कैसी फील हो रही है? आप किस चीज से आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को? आपके अंदर हैप्पीनेस है, आप काम फील कर रहे हैं, क्यूरियस हैं, थोड़ा एक्साइटेड हैं, या किसी वजह से एंग्शियस फील कर रहे हैं, या स्ट्रेस फील कर रहे हैं? यू कैन अनम्यूट ऑल्सो एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट इन द चैट बॉक्स. तो पीपल आर राइटिंग काम फील कर रहे हैं, फातिमा हसन. कुछ लोग एंग्शियस फील कर रहे हैं, कुछ लोगों ने शायद और भी रिस्पॉन्स आ रहे. तो मैं चाहूंगा इफ मिस डॉल्फी, इफ इट इज पॉसिबल, देन अगर कुछ इनमें से कुछ लोग, एक दो लोग बात भी करना चाहें तो प्लीज सर, स्पीक, अनम्यूट करके. नहीं हो पाएगा. Okay. Request you that chat box if you can communicate and interact with. Fine. The what the options are coming up are like calm feel हो रहा है. Some people are also anxious and mostly it's positive. मुझे लग रहा है कि focused feel हो रहा है, excited feel हो रहा है. Yes. And Khushbu is writing कि focused feel हो रहा है. And Suchitra ji is anxious and happy. Vineet, grateful. And so I think largely there is a sense coming out of this a small check-in exercise. कि और इनफैक्ट ये जो नज़ीर अहमद खांडे नर्वस फील कर रहे हैं, रंजना जी फोकस फील कर रही है. सो पॉसिबल होगा तो अगर आपको लगता है कि आप उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहेंगे, इफ यू वांट टू रियली टेल मी दैट इन द चैट बॉक्स इटसेल्फ के व्हाई इज दिस फीलिंग राइट नाउ, यू नो, इफ इट इज कंफर्टेबल विद यू टू शेयर कि ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप एंग्शियस फील कर रहे हैं या पर्टिकुलर इमोशन जो आपने बताया. तो ये चीज आप अपने, मैं कहता हूँ कि ये बिगिनिंग की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये आप अपने बच्चों के साथ और अपने स्कूल में, अपने सिस्टम में, जहां पर भी आप बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, आप उनके साथ इन द वेरी बिगिनिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं. मोहम्मद शफी बाबा इफ इज फीलिंग ग्रेटफुल. एंड सो ये एक चीज आई थिंक व्हेन आई सी दिस I can recall of my days in recently as a Fulbrighter in US, and the very first thing that which they do in the classrooms, which they do in the educational system in US, particularly in that school where the schools where I visited recently, was that every day the school begins by organizing or by having a kind of advisory system wherein a teacher, each teacher or a group of teachers, they take the children to a class, and then they start talking about how was the day before, you know. So you have 10-20 number of children around you, and by turn wise you talk to them and tell them, or rather ask them, that how was your day before, you know. तो क्या आपने कल क्या किया और आपने किस तरीके से अपना दिन स्पेंड किया. तो एक एक करके जो बच्चे हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं टीचर के साथ कि आई फेल्ट गुड लास्ट टाइम, आई वेंट टू पार्टी, आई डिड सम स्केटिंग, आई डिड सम स्नोबोर्डिंग, और मैंने कुछ और किया. तो आई वाज ऑब्जर्विंग दैट आई थिंक द डे बिगिंस बाय रियली टेकिंग अ डीप डाइव इनटू द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन. तो अगर हम पहली ही चीज हम क्लास में, अपने स्कूल में और अपने सिस्टम में बच्चों के साथ हम ये करें कि उनके इमोशंस को जानने की कोशिश करें. जैसे कि अंसारी साहब ने इन द वेरी बिगिनिंग ही मेंशन दैट, यू नो, इट्स ऑल अबाउट knowing the emotions and emotional intelligence जो उन्होंने डिस्कस किया. तो नाउ आई थिंक this gives me and this gives the whole discussion a perspective that, you know, हम किस तरीके डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं आगे. This is where we are actually trying to go to. So
Now, coming to a slide from Jammu and Kashmir, how we really we try to go about it and in the classrooms, Now, before really we start digging deep into the session and उसके बाकी discussions aspects पे बात करें, तो मैं थोड़ा सा perspective में लाना चाहूँगा कि जो हमारा SEL है, जिसको अभी थोड़ी देर पहले define किया कि how to know about your emotions and how we can identify our emotions, how we really maneuver our emotions, or how we really been able to, if we are able to really take positive outcomes out of our emotions, और अपनी learnings में भी इसका जो emotions का है, social emotional learning का, उसको हम अपनी learnings में किस तरीके से काम आए, अपनी life में किस तरीके से काम आए. तो एक चीज अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुई कि आपके जो SEL हैं उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, और उन 5 कंपोनेंट्स पे आने से पहले मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारा ये वाला आपके सामने जो स्लाइड दिख रहा है, तो ये एक ऑलरेडी डाइट बारामूला हैज़ बीन डूइंग some part in building upon this understanding of SEL in Kashmir, because Kashmir is again a unique background, a unique context to discuss the SEL. उसके रीजंस हैं कि हमारे पास एक लंबा स्पेल एक विंटर का रहेगा, जहाँ पे मोस्टली पीपल आर इनसाइड एंड it has a bearing on the hearts and minds of the people. And then we have certain other social emotional aspects also. So because of that, तो किसी वजह से children in fact are the silent sufferers. I always say that children are the always silent sufferers. They are vulnerable, no doubt. तो वो ये फील करते हैं. बट हमने कुछ कोशिशें की एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो we have been doing certain things in education department itself, that children before disasters हम क्या कर सकते हैं, during disasters हम क्या कर सकते हैं, और after disasters हम क्या कर सकते हैं. तो SEL को तीनों पर्सपेक्टिव्स में समझने की जरूरत है. पहली चीज है कि जो disasters and emergencies, like somebody said that they are natural or they are created by our own, certain interlinked activities जो हैं. But अब वो भी अभी एक अलग क्वेश्चन है कि can we really say that they are natural disasters? Again, a question being discussed these days. तो now इसको इन 3 कॉन्टेक्स्ट में आप समझने की कोशिश करेंगे. नंबर 1, बिफोर डिजास्टर्स हमारे क्या सिचुएशन है, पीस टाइम में हम क्या कर सकते हैं. ड्यूरिंग डिजास्टर्स हमारा जो है इस SEL की और वेलबींग की एक्टिविटीज हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं. एंड आफ्टर डिजास्टर्स, when the disaster happens, how really can we help the children cope up with these to build upon their own strengths. तो इन तीन ही चीजों को ध्यान में रखना है. और मेरे ख्याल से इस वक्त जो हमारा फोकस रहेगा वो एक प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर और ड्यूरिंग डिजास्टर्स के ऊपर हम कोशिश करेंगे. तो लार्जली इट इज प्री डिजास्टर वी कैन से. तो के सेशन का जो फोकस एम्फोसिस रहेगा, इट विल बी प्री डिजास्टर्स, एंड वी विल टच अपॉन ड्यूरिंग डिजास्टर्स और आफ्टर डिजास्टर्स में भी क्या होता है. Your voice is breaking, Mr. Alfie. Sorry. So you can switch off the video, so maybe then that will help in bettering the audio quality. Your voice is again breaking, Mr. Alfie. We are not Can able you to just hear you properly. Your voice is breaking. Okay, sir. Yes, sir. Yeah. अभी ठीक है. हाँ जी. हाँ. Sorry. Yeah. Is it okay now? हाँ जी, right. Yes, sir. It's fine now. So what I was talking about was that it will touch upon largely on peacetime activity जो हमारी डिजास्टर से पहले की सिचुएशन में हो रहती हैं उस पे, और थोड़ा सा टच अपॉन करेंगे कि ड्यूरिंग और आफ्टर डिजास्टर्स में हमारे पास क्या स्कोप है. और मे बी डॉक्टर मुदस्सिर इज इन अ वेरी वेल पोजिशन्ड पर्सन एंड एक्सपर्ट कि जो आफ्टर डिजास्टर्स पे मे बी बात करना चाहें कि डिजास्टर्स के बाद के जो सिचुएशन बच्चों के साथ होता है, तो उस पर हम किस तरीके से हाउ वी कैन रियली बी एबल टू कोप अप एंड help them build the resilience in children. तो ये एक एस्पेक्ट हमारा मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्लाइड पे, एक एक्टिविटी है कि डीप ब्रीदिंग एक्टिविटी की जो है क्लासेस में हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं कि द स्कूल्स एज अ फैकल्टी मेंबर एंड एज इन द टीम
where I work right now. So we ensure that in schools we try to really help children do these kind of activities. Okay, morning should begin with SEL check-in, and then we try to help them really build this inner resilience by these activities. So these activities are directly connected to those 5 skills which we will gradually discuss, and which were touched upon by Dr. Ansari. So ये deep breathing exercise, and to help children really calm their nerves, और उनको एक कनेक्ट फील करवाना कि भाई आपकी एक अपनी अवेयरनेस से आसपास wherever you are positioned, wherever you are, तो उनको ये समझाने का और रिलेट करने की कोशिश करने की थी कि एक कंपैशन बिल्डअप करने की कोशिश कि क्लासेस में आप पहले स्टार्ट करें बाय डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू काइंड ऑफ हम जिक्र कहें उसको, whatever term you use it, तो कोशिश ये है कि बच्चे को अपने आप के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जाए. तो दिस इज द बिगिनिंग. आई थिंक अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, वी आर रियली एबल टू रियली मेक द चिल्ड्रन अवेयर ऑफ देमसेल्व्स कि भाई आप कहाँ पे हैं, एग्जैक्टली आपके आसपास क्या है, और आप किस तरीके से उन चीजों के साथ रिलेट कर पाते हैं. आई थिंक दिस विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट इफ यू कैन डू सो, एंड दैट टू ड्यूरिंग द पीस टाइम, जब डिजास्टर नहीं है, राइट. नाउ उसके बाद हमारे पास जब एजुकेशन एंड इमरजेंसीज की बात आती है, तो उसमें जाहिर सी बात है, somebody discussed that how we are impacted. तो जो लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, largely they are educators from Jammu and Kashmir. So I want to really tell you that we have physical disasters जो हमारे पास physically हमारे साथ होते हैं. हमारे अब सबसे ज्यादा तो vulnerability हमारी earthquakes की है, landslides, floods और fires की है, और उसमें एक context हमारा build-up होता है कि 2005 का earthquake, जिस पे बात करना बहुत ही जरूरी है कि wherein we lost, I gathered a data जो हमारे ग्राउंड जीरो से मैंने डेटा लिया, एंड आई फाउंड आउट दैट ऑलमोस्ट आउट ऑफ 680 lives we lost in the Udi area of 2005 ground zero of earthquake 2005. तो उसमें मैं I found out that more than 50% were children in the age group of 1 to 18. तो 0 to 18 से या 1 to 18 अंडर 18 ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा बच्चे थे जिनकी डेथ हुई थी, और उनमें से कुछ बच्चों के साथ जो बच्चे अब बच गए, आई विजिटेड द सेम स्पॉट आफ्टर 10 years, एंड अब यकीन करें कि उनकी वो इमोशनल सोशल इमोशनल लर्निंग का व्हाट वर द सीन्स लाइक. आई कॉन्टेक्टेड कपल ऑफ चिल्ड्रन जो अभी इन देयर टीन्स में थे, और एक बच्चा उसकी मैं शायद प्रेजेंटेशन में अपना उसका फोटोग्राफ डालना भूल गया कि ही इज स्टिल ड्राइंग. वो अभी भी वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस अपने ड्रॉ कर रहा है थ्रू हिज पेंटिंग. जो उसकी मैंने पिक्चर्स देखी, उसकी जो मैंने आर्ट वर्क उसका देखा, तो दैट रिफ्लेक्टेड दैट हाउ रियली हाउ ही वाज स्टिल, आई मीन having those memories, those nightmares and those kind of feelings in him, कि शायद वो कहीं ना कहीं उसके साथ अभी भी जुड़ा हुआ था, और उसने उसको एक्सप्रेस करने की जो कोशिश थी वो थ्रू हिज आर्ट कोशिश कर रहा था. एंड देयर आर लॉट मोर पीपल जिन्होंने डिस्कस किया कि वी स्टिल हैव दोज नाइटमेयर्स. हमारे पास अभी भी वो मेमोरीज और फ्लैशबैक्स हो जाते हैं जब भी कोई इस तरह की मामूली, अगर थोड़ा सा भी कहीं अगर मामूली शेकिंग भी होगा, एंड वी आर रियली ट्रांसपोर्टेड बैक टू दोज to that time of 5th October of 2000, 8th October 2005. तो इस तरीके से ये समझ में आता है कि जो भी आपके सोसाइटी में, जो भी आपके सोशल सेटिंग में कोई भी इस तरह की रिस्क इन्वॉल्व है, कोई भी डिजास्टर या कोई भी हैजर्ड बिल्डअप हो रहा है, तो उसका एक डायरेक्ट बियरिंग जो है बच्चे की सोशल, इमोशनल और उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर सीधा सीधा होगा. नाउ एंड कोविड, ऑफ कोर्स we saw that how COVID in fact impacted. So that again is how many children were out of school, and how many of them were really impacted by being just restricted to their homes. And then again एक और perspective उसमें निकल के आया कि children were the only section of community who were really able to really take care of the family, in fact, as heroes. कि उन्होंने उनके अंदर एक hope सी थोड़ी सी दिखती है कि if we really invest on the social and emotional learning of children, they can turn out to be very
I mean, the true ambassadors of this SEL, because उनके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो अभी आपने SEL का किया होगा, by giving your time and your energy, by giving the kind of by actually making yourself aware of all those vulnerabilities, so they can turn out to be great assets, you know. तो वो हमें कोविड के दौरान समझ आया कि how children were really able to take care of the whole family by being so jolly and so happy in the initial एक दो phases में, and then later on उनके ऊपर भी उसका एक onslaught था, but शुरू में ये हुआ कि एक उन्होंने उसको पूरे माहौल को घर के माहौल को उन्होंने एक पेप अप करके रखा हुआ था. So they have the capacity, if we can really start investing and start counseling, start investing in their capacities, तो हम उनको I think मजीद तैयार कर सकते हैं for any unseen, any unfortunate or unprecedented disaster or emergency. Now, first skill, I think हमारे सेशन का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि पहली चीज तो ये कि SEL and educational research में क्या है, how SEL is important in educational research, that and how many actually I should have asked that in the first instance. या अभी भी मैं पूछना चाहूंगा कि इससे पहले मैं अपने I want to address to the participants that how many of you have had learned or heard of this word SEL before? आप में से मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि कितने लोगों ने SEL के बारे में इससे पहले सुना था या इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी. अगर थी तो आप क्या समझते हैं कि क्या जानते हैं आप SEL के बारे में? चलिए पहले आप ये बताएं कि हाउ मेनी ऑफ यू हैड हर्ड ऑफ दिस वर्ड SEL बिफोर? नो. Javed Sahab has raised his hand, but I think Javed Sahab, we will give you a chance to really speak maybe after the end of the session, and yeah, thank you so much for joining. So बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि हमने नहीं सुना, not heard before, not heard for first time. हमें समझा नहीं कि not heard for first time क्योंकि पहली बार इसके मतलब पहले सुन चुके हैं. Dr. Kurrat, no. Sonali, yes. So I think largely those who are working closely with children, those who are working as professionals, I think कुछ लोगों ने तो ये कहा कि हाँ और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं. तो एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को ने सुना हुआ है, कुछ लोगों ने काम किया हुआ और कुछ लोग उसको वाकई इंडीड मीनिंग्स में समझते हैं कि SEL क्या है. और that makes us feel that, you know, it is very important for us to understand this SEL, what is social, emotional, and what is learning all about, and how are these two connected, and how these two are as enablers to facilitate the learning process. So social or emotional learning के बारे में I think we will again talk about it, and second part will be that examination stress के साथ भी थोड़ा सा इसको लिंक करके देखना पड़ेगा, second skill, and third will be that to understand the need of emotional learning in the context of our Kashmir, including जो reflections हैं हमारी own practices की, थोड़ा सा मैं अपना experience भी share करूंगा कि किस तरीके से हम देखते हैं. तो I talked about this COVID, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की. वो जो एक मैनुअल आप देख रहे हैं यहाँ पे ना अपने स्क्रीन पे, कि एक पिक्चर दिखाई हुई है, होल स्कूल सेफ्टी मैनुअल हमारे पास करके है एक डॉक्यूमेंट, and which was an initiative by Samagra Shiksha and with UNICEF, and we did one part of it was based on our physical safety of children in disasters, and इसका second volume जो है, second part इसका जो है, that deals with the social emotional और उनकी जो protection वाला part है in terms of their emotions. So this document is already ready. I want to really highlight this important aspect that our department had done an exercise, very great exercise since last, I think, 2019 to 2022. And we were able to produce this wonderful document, and it has reached to all the schools, you know. Again, I will request all the teachers and educators that it has reached to your schools. Kindly check this,
kindly read this about, kindly talk about this in the school, and kindly discuss it with the peers and educators you are working with. So it has certain guidelines that how we really can make the whole school environment safe, and and that has some aspects of social emotional learning it as well. Maybe उतना ज़्यादा advanced SEL की discussion नहीं है, but it has certain parts which really indirectly touch upon the SEL. Now, social emotional learning, as people are saying, we have not heard about this. I want to tell you that social emotional learning is just to really understand and negotiate with the emotions which are contextual. As somebody has written के social emotional learning जो है वो आपकी एक graph है जो continuously it keeps on changing, because आपका mood, आपके emotions, they keep on changing because of certain reasons. Maybe आपकी age के साथ जुड़ा हुआ है factor, आपके health के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी immediate surrounding के साथ, because we have used the term social means that we are already connected with this with so many people, आपके school में, आपकी community में, आपकी family में, और आपकी larger community society में. So it has a context, और इस इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए आपको पहले अपने आप को समझना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड दैट अगर आप अपने ऊपर कंपैशन, अपने आप के साथ कंपैशनेट हैं, अगर आप अपने आप को समझते हैं, तो तब जाके आप और जो आपका सब्जेक्ट्स हैं, आपके बच्चे, आपके कोलीग्स, उनको समझेंगे, और तब आप एक हेल्दी इम्पैक्ट उससे निकल के आएगा. सो SEL इज नथिंग but to understand and to negotiate and to deal with those emotions, and how really we can be able to take opportunity of these emotions to get positive outcomes. Okay, so we'll discuss upon it. कि अभी किसी मैंने start में कहा कि I feel anxious, और किसी वक्त we feel very angry. So it is very normal to feel angry. Maybe Dr. Mudassir will touch upon these areas also. Feeling angry, feeling anxious is fine. हमारे बच्चे इस वक्त एग्जाम देने से पहले they are feeling anxious and they are feeling at times confused भी लगता होगा, थोड़ा सा कभी थोड़ा सा anxious feel होता होगा. It is normal for them to feel the way they are feeling right now. But the thing is that how and what role we can play. हम किस तरीके से उनको ensure करें कि it is just an exam. It is just an exam that it will pass on, and this is not which is the only thing that will define your career and your life. This is part of it, and take it as a reflection of what you have been doing in the last 1 year, and that's it. उससे ज्यादा कुछ नहीं है. तो अगर हमने ये कहा कि भाई ये आपका डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, आपने उसको ग्रेड के साथ लिंक किया, आपने उसको लाइफ की परफॉर्मेंस के साथ लिंक किया, और नतीजा ये होगा कि वी मे, God forbid, we may lose the childhood, we may lose their innocence, we may lose them altogether, maybe. तो वो सिचुएशन से लाने से पहले हमें समझना होगा कि बच्चे के अंदर क्या वो अपने इमोशंस को नेगोशिएट करना जानता है, क्या वो अपने इमोशंस को उनके साथ खेलना, उनके साथ समझने की कोशिश करता है क्या, उस स्टेज पे उनको लेके चले जाए, राइट. तो अब इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं इस SEL को लेके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इज द टीचर, द एजुकेटर. कि हमारे पास इस सारे लोग, काफी लोग जो है वो टीचिंग फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए, और कुछ प्रोफेशनल्स भी जुड़े होंगे. तो दोज आर द पीपल हु हैव टू अंडरस्टैंड दिस. एंड एज आई सेड दैट कोविड हैज ऑलरेडी सेट अ कॉन्टेक्स्ट फॉर SEL. आई थिंक इट वाज नेवर बिफोर टॉक्ड अबाउट, देन इट इज नाउ आफ्टर COVID-19. तो उसमें उस वक्त हमें थोड़ा सा मौका मिला समझने का कि देखें किस तरीके से फिजिकली जब आप रिस्ट्रिक्टेड हैं इन योर प्रोमाइसेस, आप अपने घरों में, तो किस तरीके से अपने ऊपर वर्कआउट करने की कोशिश की जाए, राइट. सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट. एंड एज आई सेड दैट लेट्स कैटर टू द हार्ट्स फर्स्ट, देन माइंड्स. तो अगर बच्चे के आप दिल तक पहुंचे, उसकी आपने बात, उसकी इनर इमोशन को आपने समझा, तो वो आपका रेस्ट ऑफ द चीजें जो हैं बाकी आपकी सब, they will be well in place. Yes, emphasis largely हमारे SEL का emphasis कहाँ पे है.
सो करिकुलम नंबर 1 और करिकुलम में जब हम बात करेंगे तो करिकुलम में अभी रिसेंटली वी हैड yet another wonderful piece of document, a visionary document with us, which is the National Education Policy 2020, number 1. And is NEP, if you read NEP very closely and carefully, you will find that SEL has a very significant place in the document. SEL पे उनकी इमोशंस की बात की जा रही है, SEL NEP में बच्चों की वेलबींग की बात की जा रही है, SEL में NEP में बच्चों की उनके सेफ्टी की बात की जा रही है। और सेफ्टी खाली फिजिकल सेफ्टी नहीं है कि भाई कोई डिजास्टर होगा एंड वी मे लूज चाइल्ड ऑल टुगेदर फिजिकली, बट आपके डिजास्टर इस तरह की भी हैं कि जो इनविजिबल डिजास्टर्स हैं, जो स्ट्रेस आपका एंजाइटी और आपके जो बाकी सोशल बिहेवियरल और मेंटल डिजास्टर्स हैं, वो भी एक किस्म के डिजास्टर्स हैं जिसको आप इनविजिबल कह सकते हैं, बट दे हैव वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड्स वेलबींग। ओके, सो करिकुलम में आपके ऑलरेडी कुछ चीजें जो हैं धीरे धीरे करके आ रही हैं, बट इंपॉर्टेंट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि लास्ट टाइम वी हैड अ डिस्कशन on how curriculum can be a guiding force in the South Campus of CCDR during a workshop of NIDM, wherein we had a panelist on from NCRT, and she said that instead of just mentioning, अगर हम खाली इसको करिकुलम में ही डाल के रखेंगे और उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका कोई आउटकम निकल के आने वाला नहीं। सो वी हैव टू एंश्योर दैट व्हाटएवर इज, जो भी हमारे गाइडलाइंस बुक्स में, जो आपको मैंने बुक रेफर किया अभी, सेफ्टी का मैनुअल, या आपके जो करिकुलम में आपके जो सेफ्टी SEL को लेके डिस्कशन होता है, बिहेवियरल मेंटल वेलबींग को लेके डिस्कशन होता है, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका जो है उसका इम्पैक्ट वापस बाहर निकल के नहीं आएगा। इस तरह हमारे पास गाइडलाइंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइंस है, डायरेक्शंस है कि SEL और अपनी सेफ्टी को लेके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके, गोल 4 जब हम कहते हैं तो वी टॉक अबाउट क्वालिटी एजुकेशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एजुकेशन। एक क्वांटिटी के तौर पे हम एजुकेशन को हम बात नहीं करते। जब SDGs की बात करते हैं तो गोल 4.7 says that we have to strive for quality education, और quality education is beyond grades and beyond numbers. So this is the time you should really speak to your children at home that examinations are going on, but आपका जो है फोकस रहना चाहिए क्वालिटी के ऊपर। Even if you miss a grade by 2 or 3, और आपका CGPAs, आपके ओवरऑल पॉइंट परसेंटाइल आपका कम आ रहा है, doesn't matter. But because life is not all about numbers and it's not a number game. So you should really emphasize, and all these things, in fact our Right to Education Act हमारा 2005 का, अगर आप उसको खोल के देखेंगे, it explicitly says that it should be stress free. आपका जो असेसमेंट होगा वो एकदम स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। वो जब आपने असेसमेंट की बात की, that we have really a wonderful thing going on right now in Jammu and Kashmir, कि we have started as per NEP, हमारा डॉक्यूमेंट बात कर रहा है इसकी असेसमेंट्स की, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स की, और असेसमेंट और ग्रेडिंग से हट के बात की जा रही है कि आप बच्चों को असेस करो उनकी स्किल्स के ऊपर, और बिल्डिंग सोशल इमोशनल स्किल्स, आपकी सोशल इमोशनल स्किल बिल्ड करना ही अपने आप में एक स्किल है, राइट। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सारे हमारे पास फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसकी हमने ऑलरेडी बात की NEP और NEP 2020 की और SDGs की। अब व्हाट आर द बैरियर्स? अब आप कहेंगे कि SDGs की तो हमने बात की, लेकिन बैरियर्स क्या हैं? जो बैरियर्स हमारे इस SDGs को हमें आगे पुश करने में, आगे इसको रियलाइज करने में हो रहे हैं, मुश्किल साबित हो रही है। एट द रूट इज सोशल स्टेटस एंड इकोनॉमिक बैरियर्स। आपका सोशल स्टेटस, because you have a amalgam of children, आपके पास एक whole bunch of children coming from different social and economic statuses है, वो हिंडर करते हैं, वो एक बहुत strong hindrance पैदा करता है कि आपके पास social emotional skills किस तरीके से develop हो, right? So when a person is एक father for example, अगर आप इस तरीके के social economic background से आ रहा है कि वो मुश्किल से अपना daily livelihood की needs को पूरा कर पा रहा है, तो उसके पास उतना टाइम नहीं होता, उसके पास उतना स्किल्स नहीं, उसके पास ताकि वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सके, इवन उसके पास उतना पैसा नहीं कि वो इन्वेस्ट कर सके और फिर वो अपने बच्चे से बात करे, राइट। सिमिलरली वी हैव अदर थिंग्स, जेंडर बायसेस भी है, which we are really taking care of in your classroom situations, that
between girls and boys, between transgenders. We had a workshop on vocational education where we talked about how really they are being discriminated and how they are subject to critical, very brutal kind of treatments when you talk about transgenders in Kashmir, for example. So these gender biases with respect to girls and with respect to in fact transgenders and all. So ये एक impact करते हैं society की important है. And at the top is in fact class and caste barriers हमारे कि आप इन सारी चीजों को लेके भी क्लास और कास्ट को लेके भी हमारे क्लासरूम्स में भी और जरूरी नहीं कि इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन एंड टीचर्स बट इट इज मोर बिटवीन द चिल्ड्रन एट टाइम्स कि बच्चा दूसरे बच्चे को रिमार्क पास करता है कि अब यू बिलोंग टू सच अ कास्ट, आपके पापा जो है वो इस तरीके का काम करते हैं, ठीक है, एंड देन यू सी हाउ द थिंग्स चेंज आफ्टर दैट, सो दीज आर द सिस्टमिक बैरियर जो हमारे SEL को हमारे क्लासरूम्स में हमारी एजुकेशन में इम्पैक्ट कर सकते हैं, राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं कहता हूं कि आई विल पिच फॉर दिस स्लाइड फॉर टीचर्स के आप देखिए कि एकेडमिक आपकी जो ग्रोथ है, आउटपुट जो है, इट हैज टू बी बैलेंस्ड विद ग्रोथ एंड वेलबीइंग. आपका एकेडमिक ग्रोथ इज फाइन, एकेडमिक आउटपुट इज फाइन, बट आपका जो ये है ग्रोथ है आपकी जो आपकी इसी हमने मेंटल वेलबीइंग और सोशल और बिहेवियरल और SEL की हमने बात की, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट है. तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये इम्पैक्ट ये अप्रोच भी एंड इट शुड बी मोर टिल्टेड टुवर्ड्स ग्रोथ एंड वेलबीइंग. सो NEP हमारा और बाकी डॉक्यूमेंट्स तो इसी पे बात कर रहे हैं कि एकेडमिक आउटपुट पे उतना एम्फेसिस ना हो बल्कि ग्रोथ और वेलबीइंग के ऊपर आपका एम्फेसिस हो, राइट. एंड आफ्टर दैट Kashmir का context is very clear that now lot of things happening right now और बच्चों को लेके काफी ही एडवांस चीजें अब सुनने को मिल रही है. क्लासरूम के अंदर किस तरीके से ट्रीटमेंट होती है उनकी. टीचर एट टाइम बिकॉज ऑफ हिज इग्नोरेंस, we have teachers with us, but you will agree that many of you have not heard this word SEL before. So अगर टीचर अपने आप में अभी नहीं जानता, if he is not really yet able to understand the context of social emotional learning, so किस तरीके से ट्रांसलेट कर पाएगा विद चिल्ड्रन, राइट. सो उसको ये समझना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है उसकी टीचिंग लर्निंग के ऊपर. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किस तरीके से कर सकता है वो क्लास में, कंपैशन किस तरीके से बिल्ड कर सकता है, और रिस्क फैक्टर्स और देयर आर सो मेनी रिस्क फैक्टर्स. तो जो मेरे ख्याल से मे बी इन डिटेल डॉक्टर मुदस्सिर विल मे बी टॉक अबाउट दिस कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स आल्सो, कि हमारे पास जो रेट्स ऑफ सुसाइड से वेरी कॉशियसली आई एम सेइंग दिस वर्ड कि वो उसका इंक्रीज होना, ड्रग्स का और बाकी चीजों का जो ऑलरेडी इम्पैक्ट हो रहा है, और सोशियो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं जो कंपाउंड करते हैं सारी चीजों को. सो वी रियली हैव दीज फैक्टर्स और इनका एक सीधा इम्पैक्ट है इसके साथ, राइट. नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस एंड मैं इसमें आई थिंक कुछ if I have another 5 minutes, Ms. Dolphy, then I will just touch upon these things. What Dr. Ansari actually was trying to say that, आपका SEL जो है, SEL is basically, there are so many frameworks, to discuss SEL in your classrooms. बहुत सारे modules हैं, बहुत सारे approaches हैं. So one of the approaches which I used to do and I did in my teaching practice और टीचर ट्रेनिंग के दौरान भी, which was a framework by Castle, is अमेरिकन फ्रेमवर्क जो हमारा है, which is वो कोशिश कर रहा है कि अब 21st century skills जो है बच्चों को और टीचर्स पे अंदर वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. और उसमें उनके 5 कंपोनेंट जो दिए गए हैं. नंबर 1 इज सेल्फ अवेयरनेस, कि हाउ टू मेक अ चाइल्ड रियली सेल्फ अवेयर, उसकी अपनी इमोशंस को लेके वो पहले अवेयर हो जाए. जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि आप मुझे बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो बच्चे को हम ये टूल टेक्निक इस्तेमाल करके हम उसको बता रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, इमोशंस हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हैप्पी, गुड, व्हाटएवर. तो वो पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए अपने आप के साथ कि भाई मैं कैसा फील कर रहा हूँ, राइट. और उसमें कई सारी टूल टेक्निक्स हैं. देन फिर उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट, वो अपने आप को कैसे मैनेज करता है, अपने टाइम को, अपने इमोशंस को, अपने रिलेशनशिप्स को, ठीक है, और उसको किस तरीके से मैनेज करता है. सिंपल सी एग्जांपल, आपका बच्चा अगर आपकी क्लास में हो और एक बच्चे को पेंसिल की जरूरत पड़ती है या दूसरे बच्चे ने खाना नहीं लाया है, और आप उस बच्चे को कहते हैं कि आप ये आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी हेल्प करता है कि लुक
You have to just see कि कितने बच्चे हैं जो शेयर करेंगे अपना पेंसिल, अपना पेन, अपना कोई इस तरह की कोई चीज क्लासरूम में, और कितने बच्चे होंगे जो उस चीज को नहीं शेयर करेंगे। तो शेयरिंग इन इटसेल्फ इज, आई मीन ये आपकी एक डिस्कस करता है कि वो रिलेशनशिप स्किल्स पे इन्वेस्ट कर रहा है वो बच्चा, राइट? और वी शुड हेल्प देम रियली इन्वेस्ट ऑन दीज स्किल्स। ओके, तो इस तरीके की चीजें क्लासरूम में जब हम करते हैं तो वो बच्चा सीखता है सारी चीजें। सेल्फ मैनेजमेंट किस तरीके से की जाए, सोशल अवेयरनेस, अगेन सोशल अवेयरनेस आपके आसपास की चीजें आप बच्चे को सिखा सकते हैं कि आपके आसपास की जो सोशली प्रेसिंग इश्यूज हैं, वो हाइजीन का हो सकता है, वो किसी बर्निंग इशू होगा कोई सोसाइटी का, वो कोई क्लासरूम की कोई डिस्कशन होगी, और उसमें आप बच्चे को बताएंगे कि सिखाएंगे कि भाई कितना अवेयर हो आप ही अपने आसपास के साथ, with your peers, with your community, within your classrooms, ठीक है? And then relationship skills, और ये सारी स्किल जो है ये हम एक एक करके क्लासरूम में बच्चे को सिखा सकते हैं, और ऐसा नहीं कि ये आइसोलेशन में है। We have been already doing these skills, we did one course in Jammu and Kashmir, again UNICEF and Tata Institute of Social Sciences did a almost 3-month long exercise जिसमें उन्होंने 21st century skills के ऊपर एक कोर्स करवाया। Almost maybe more than 300 teachers were trained, but discussion ये हुआ कि वो वहीं पे एंड हो गया। It should have been really taken to the schools and to the classrooms, or rather to the peers, कि if we have really learned these skills, और 21st century जिनको skills को हम कहते हैं, कि जो empathy की बात की गई थी, अभी थोड़ी देर पहले empathy की बात की गई थी, थोड़ी देर पहले उनको इमोशन रेगुलेशन की बात की गई थी, तो वो सारी स्किल्स हम किस तरीके से ट्रांसलेट करें बच्चे तक, राइट? यूजिंग डिफरेंट थिंग्स। मैंने एक एग्जांपल दी थी SEL चेक-इन्स की, मैंने एक और स्लाइड में इसमें लिखा हुआ एडवाइजरी जो है अर्ली मॉर्निंग्स के, क्लासरूम बिगिन होने से पहले आपके एडवाइजरी सेशन हो स्कूल में, कि जहां पर आप 10 बच्चों को लेके, इंस्टेड ऑफ अ लार्ज गैदरिंग ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास इन द ग्राउंड, अगर आप 10-10, 20-20 बच्चों को आप लेके क्लासरूम में डिस्कस करते हैं कि हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ, एंड व्हाट यू हैव बीन डूइंग लास्ट टाइम अर्ली, कल दिन में आपने क्या किया। सो बच्चा ओपन अप होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ रियली सोशल इमोशनल लर्निंग ऑन द वेरी फर्स्ट डे एंड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। और उसके बाद फिर आपके साथ और एक्टिविटीज की हैं, कि बाद जस्ट टेल द 2 चिल्ड्रन, आप 2 बच्चों को बिठा के आमने सामने इन पेयर्स, अब ये पूछिए कि बताइए भाई आपके जो फ्रेंड है, आपके जो क्लास में थे, उसके बारे में एक अच्छी चीज बताइए, ठीक है? He will start telling you that what are the qualities, that makes him feel that makes the relationship building very strong. तो रिलेशनशिप जो बिल्डिंग है उससे वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एंड देन देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज व्हिच यू कैन डू, है ना? नेचर वॉक्स, ठीक है? रिफ्लेक्शन टाइम उनका, give them time to really reflect on what they have been doing instead of just throwing content at them. उनको कंटेंट उनकी तरफ थ्रो करने से अच्छा है कि उनको मौका मिलना चाहिए कि हाउ दे रियली रिकंसाइल विद देयर ओन इमोशंस एंड दे आर रेजिलिएंट एनफ, कि अगर वो क्लास में कल को ग्रेडिंग उसकी कम होती है, से फॉर एग्जांपल उसके कल को ग्रेड्स कम आते हैं, ही शुड बी, वो जहनी तौर पे इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको ये पता हो कि इट डजंट रियली मैटर, मेरे ग्रेड्स मैटर नहीं करेंगे, राइट? सो बिकॉज वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, हमारे पास टाइम उतना नहीं है, तो लेकिन ये कि लास्ट पे मैं मेरे ख्याल से इस चीज पे मैं एंड करूंगा कि Dolphy, how much time we have? I mean, I have. Sir, actually the time is over, so I would request you to Okay. please conclude, because Yeah. we also have to give some time for question answer, so we can take it up Questions. at during the question answer Fine, round. fine. So let me now bring it up. I mean, last slides maybe just in 1 minute time. मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि इम्पोर्टेंट ये है कि जो सेल्फ गिवर्स हैं, केयर गिवर्स, टीचर्स, इनके ऊपर पहले इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। जैसे दिस प्रोग्राम इज रियली अलाइंड विद द सोशल इमोशनल लर्निंग जो डिजास्टर्स में होती है, उसमें पहला ब्लॉक है हमारा टीचर या जो केयर गिवर है डिफरेंट सेटिंग्स में, तो उनको पहले हमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए कि इफ दे आर अवेयर, अगर आप लोग अवेयर हैं, इफ यू हैव रियली इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग दीज स्किल्स, यू कैन रियली ट्रांसलेट इट टू द चिल्ड्रन, ओके? और अगर आपके अंदर वो इन्वेस्टमेंट आपने नहीं की हुई है, तो आप वो होगा, वो सही तरीके से ट्रांजैक्ट नहीं कर पाएंगे विद द चिल्ड्रन, एंड यू विल नॉट बी एबल टू रियली बिल्ड अपॉन दीज स्किल्स। एंड
डायरेक्ट और परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट्स बच्चे को रियल टाइम में आप उनकी असेसमेंट करने की कोशिश कीजिए। आपके एग्जाम चल ही रहे हैं तो क्यों ना 2 सवाल आप ऐसे डालिए कि जो आपके इसके SEL के एक पर्सपेक्टिव से उसके एग्जाम में हो, just to know, to give you an idea that what the child is thinking about. Okay, and then you have classroom observations. तीसरी चीज हो सकती है कि आप क्लासरूम में अपने ऑब्जर्व करने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ अगेन दैट थ्रोइंग कंटेंट एट चिल्ड्रन। तो कोशिश ये करें कि बच्चों की इन स्किल्स के ऊपर हम कोशिश करें कि उनके ऊपर इन्वेस्ट करने की ट्राई करें, राइट। एंड अगेन लास्टली वन लास्ट स्लाइड बिफोर आई कंक्लूड, व्हिच इज दैट फॉर एनी स्किल टू डेवलप, अब जब तक टीचर खुद चेंज नहीं होगा, I'm targeting, my focus is here not just teachers but एक बाकी जितने भी लोग हैं हमारे पास स्टेक होल्डर, if they are really themselves not able to change, अगर वो खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं चेंज करने की, तो वो आगे कॉन्क्रीट वो सिस्टम्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे, राइट। और सोसाइटी भी डिमांड ये कोशिश कर रही है कि बच्चे को वी शुड रियली टेक अ शिफ्ट फ्रॉम कंटेंट टू रियली समथिंग विच इज रियली कनेक्टेड टू द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, खुद से शुरू होंगी, कंटेंट से थोड़ा हटना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट में आना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से पब्लिक स्कूल एजुकेशन जो हमारा है इंडिया का, इट्स अ वेरी बिग इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ, वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पब्लिक स्कूल के साथ जुड़े हुए लोग, और जो हमारा एक आर्किटेक्चर है स्कूल सिस्टम का, पब्लिक स्कूल्स का स्पेशली, कि वो those are the children really I think which need most of these skills, in private institution, private setup, lot of investment is going into this। वो उनको काफी कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी काम करती हैं, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो। लेकिन प्राइवेट स्कूल सेक्टर, सॉरी पब्लिक स्कूल सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कमिंग टू दीज स्कूल्स आर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड्स, और उनके पेरेंट्स ऐसे नहीं है कि जो इन्वेस्ट करें इन चीजों पे, इन स्किल्स पे। सो teacher has to take a lead, administrators have to take the lead, and really this is how we can prepare these children for any eventuality, जिसको हम disasters या emergencies कहते हैं। लेकिन largely मेरा focus ये रहा कि प्री डिजास्टर के ऊपर ही हम बात करें कि कैसे resilience building करें, because largely मैं conclude करूंगा इस चीज से कि that when we talk about disaster management, तो आपका जो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट या बिफोर डिजास्टर मैनेजमेंट का जो डायमेंशन है, it has shifted to pre-disaster paradigm. Post-disasters, there is just post-mortem we can do. We can analyze, we can really take lessons out of it. But अगर really कोई काम करना है, then we should really focus on SEL before disasters, before emergencies, and before it takes the shape of a monster and really consume our precious lives. And yeah, with this, I thank you and thank you so much, NIDM, and thank you, Dolphy, for giving me time. Dr. Raka also. Thank you so much, Shahin sir. So we will be ready to take the questions right after this or maybe at the end of the another session. Thank you so much. We will have, thank you so much, sir. We will have the next session now, and then together we can take so that the questions at the end, so that all the other panelists can also Sure. right. So thank you so much, and thank you for contextualizing this with respect to Kashmir. So this was very unique in that respect, and thank you so much. And now, may I please invite the next speaker, Dr. Mudassir Hassan, consultant child psychologist, Government Medical College, Baramulla, Kashmir. So I will make you the presenter. Can you share the presentation? Me to speak So we because I cannot don't hear. want the So we cannot. I'm speaking The on the audio is mobile. not clear. Is it fine now? Yes, sir. Yes. My name is Dr. Mudassir. Thank you very much for inviting me. Thank you, Ramesh, for putting me in this group. Um, I am basically working as a consultant in Government Medical College, and before working as a child psychologist now in Government Medical College, I was working in the Department of Psychiatry, and I was handling child psychiatry department itself. So I know, I mean, you all are teachers, and probably you all are the people who actually should know the child psychiatry in great detail rather than me understanding child psychiatry. So I'm here to speak about, we all need to know what basically psychology is all about. हम सबको पता होना चाहिए that we all are very individually different. हम सब different होते हैं by nature.
एंड अगर हम डिफरेंट नहीं होते तो शायद साइकेट्री वजूद में नहीं होती. If we have not been so different, then the psychiatry field would have not been possible in the medical science. At the same time, I will start off with few concepts and then I will elaborate my experience with working with the kids and those जो हमारे पास पहुंचते हैं और वो शायद बहुत लेट पहुंचते हैं हमारे पास, and what do we found in them and how can we take up the questions that जो रमीज ने मुझे बोले. I will discuss on that, maybe COVID, maybe how to manage and post disaster management part, and what I have basically observed till now in these cases. I'm in hospital now, and it's my ward round, so I can get few calls from the ward. I'm really sorry. Please manage that part. I will be back within some time if it's cut down in between. Look, I mean, you need to understand. There's two terms to understand. जब भी हम देखते हैं बच्चों को, they always come up with that with the thought that हम abnormal हो गए हैं. We are not normal now. And we all teachers should know that these concepts are very very minute. Understand दो टर्म्स जो होते हैं हमारे पास, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल. जब भी हमें कुछ साइकेट्रिक इश्यूज या साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप होने शुरू हो जाते तो वी बिलीव दैट वी आर हैविंग फीचर्स ऑफ साइकेट्रिक इलनेसेस. तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने ऊपर ब्लेम लेते. तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने देखा अपने हॉस्पिटल सेटिंग्स में, जब भी हमारे पास ये बच्चे आते हैं, they always complain that they are very non normal. So but if you as a teacher will explain the same thing to them जैसे हम लोग करते हैं, तो how would you explain it? You need to understand, आपको नहीं होता है, फाइन. लेकिन जो अब आप उनको बोलोगे कि साथ में कि जो नॉर्मल है, व्हाट डू यू थिंक नॉर्मल शुड बी, तो वो हमेशा बोलेंगे जैसे आप हो, आप जैसे बैठे हुए, आप जैसे चल रहे हो, आप जैसे बात करो, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि वर्ल्ड वाइड साइकेट्री में इन दिस पर्टिकुलर सेंचुरी वी डोंट हैव अ डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये आप भी डिफाइन कर सकते हो उनको भाई ये बोल के कि जी नॉर्मलिटी इज नो प्रॉपर टर्म इन द वर्ल्ड, देयर इज नो वर्ड कंसिडर जिसको हम नॉर्मल बोलेंगे. सो इस चक्कर में शायद जब बच्चे सुनते हैं कि जब डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी नहीं है तो हम अपने आप को अब नॉर्मल कंसिडर करते हैं. दूसरी बात ये है कि जो हमने ऑब्जर्व किया है कि दैट we need to understand there are two types of disasters mostly जो हम observe करते हैं in the world wide. That's one is called natural disasters, one are called man-made disasters. So जो man-made disasters जैसे for example मैं आप लोगों के सामने quote करूंगा, जो कश्मीर में मैंने बहुत higher side से देखा है. Work in Delhi, I have worked in Madhya Pradesh also, but I have found this thing very common in Kashmir now, and maybe all teachers with me from Kashmir should understand this because we have discussed this earlier with the program in Ramesh. And there is a high cases of child sexual abuse. I mean, एक लड़की मेरे पास आती क्लास 10th में विद द प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ मल्टीपल साइकियाट्रिस्ट, एंड जब मैं उसको देखता हूँ कि आप किस किस को दिखाए, तो शी काउंट्स मी एवरी नेम. जो आसपास हमारे जो साइकियाट्रिस्ट है, बहुत कोलीग्स हमारे हैं, इनके पास भी गए, इनके पास भी गए, इनके पास भी गए. वेंट टू ऑल ऑफ दिस चीज एंड आई सी द मेडिकेशन जो उनके पास हायर डोज ऑफ साइकियाट्रिक मेडिकेशन होती है, एंटी डिप्रेशन, वो पड़े हुए थे, एंड शी इज द गर्ल नॉट इम्प्रूविंग. तो मैंने उनको पूछा, घर वालों को बाहर रखा, और घर वालों उसको बच्ची को मैंने पता नहीं पहले सेशन में सेकंड सेशन में आई रिमेम्बर माई सेल्फ, मैंने उसको बोला कि दैट आई नो बेटा आपने दवाई खाई है पर आप मेरे पास आए हो, बट दिस लॉट मोर थिंग्स जो आपके पास मिसिंग है. एंड व्हेन शी हर्ड दिस, पता नहीं उसकी आंखें थोड़ी सी नम होगी, पर वो उसने रोया नहीं. एंड शी टोल्ड मी आई वांट टू लीव, मैं घर जाना चाहती हूँ, आई प्लीज कॉल अप माई मदर, आई वांट टू मीट माई मदर अगेन. तो मैंने उसकी मम्मी को अंदर बुलाया और उसके साथ बच्ची को वापस भेज दिया. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो आप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, सोशल इमोशनल लर्निंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बेसिकली होता है. एक बच्ची आपके पास आती है, इलाज करने के लिए आती है, आपके पास किसी ने रेफर किया होता है, और जब उस बच्ची को आप बोलते हो कि कुछ मिसिंग है, तो वो जब कमरे से भाग जाती है, तो यू शुड नो दैट वो कुछ ना कुछ उसको शायद क्लिक हो गया. फाइन. Luckily, I got her back in a second week, probably, and she came to me by saying that I want to talk to you alone. मुझे आपसे अकेले बात करनी है. So I was so lucky to see that. I was very happy कि उसने ये वाले शब्द जो मेरे सामने बोले, and I told her mother to please be out for some time. And then I asked him, जी बेटा, तो then she started मेरे आपको कुछ अच्छी बातें बोलनी है. I don't know कि आपके पास कुछ रिकॉर्ड तो नहीं होगा, ये डॉक्यूमेंट में तो नहीं जाएगा, कि आपके पास कैमरा तो नहीं लगे. ये चीजें आप अक्सर देखोगे, जब भी वो सर हिलाते हैं, दाएं बाएं देख लेते, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आना चाहिए कि दैट ये बच्चा कॉन्शियसली कुछ बोलना चाह रहा है आपको. फाइन. वंस आई पुट हर मदर आउट ऑफ द रूम एंड शी स्टार्टेड, उसने बहुत रोया, बहुत इतना रोया कि मुझे लगा कि शी रियली हैज अ डिप्रेशन.
Suddenly she started talking about that I have been sexually abused by my father. This is very common now to me actually. From day one, since joining back from Delhi to this place, I thought कि यहाँ पे कम होगा, but because we are from the Muslim culture, but I believe that I have seen the largest cases of sexual abuse in Kashmir. And मुझे लगा वो जो अब देखे, what's the point? Point is that कि उसका sexual abuse होना एक trauma था उसकी brain के लिए. It is a man-made disaster. Fine. वो शायद एक टीचर को नहीं बोल पाती थी क्योंकि 10th तक आते आते, और ये क्लास 6 में हुआ था. 6 क्लास से होते होते वो 10th तक आई, किसी ने अभी तक पिकअप नहीं किया. Why our grades are decreasing? I mean, I'm not saying teachers are bad. Please don't misquote me wrong and please don't take it otherwise. You all are very lovable people. बट कभी क्या होता है, मेरा जो पॉइंट बोलने का ये होता है, जो हम आगे बोलना चाहूँ आपको, कैसे हाउ वी कैन मैनेज पोस्ट ट्रॉमेटिक डिस्ट्रेस इन दिस किड्स. शायद ये एक छोटा सा केस है आप लोगों के लिए, मगर हमारे लिए वो लर्निंग था. और जैसे ही यकीन कर ले, मेरा ना गर्ल्स इन द कॉलेज एंड शी इज डूइंग फाइन विदाउट मेडिकेशंस. Now understand is a very small example of understanding it. Second case जो मैं आपको सामने प्लीज डिस्कस करना चाहता हूँ, एक बच्चा है बहुत छोटा है, वो रोज गिर जाता है. फाइन, एंड वी कॉल दिस गिरना एज ए कन्वर्जन और डिसोसिएशंस. देखिए, जब भी आपकी कोई क्लास में या आपके आसपास में कोई बच्चा गिर जाता है, उसको मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है, और वो अनकॉन्शियस जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, हम लोग हमेशा डर जाते हैं एज ए टीचर्स. हम फील करते हैं कि दैट इसको शायद लर्न की तकलीफ है, सीजर डिसऑर्डर है, एपिलेप्सी की, प्रोबेबली ही आर शी इज सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी और सीजर्स. लेकिन हम लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं उस बात को लेकर, उसको रेफर कर देते हैं हॉस्पिटल सेटिंग, व्हिच इज वेरी नॉर्मल एंड यू शुड डू दैट. मगर जबकि शिकायत आई ना 2-4 बार के रोज रोज गिर रहा हो गया, यू शुड थिंक ऑफ दैट द गाय और गर्ल इज हैविंग सम इश्यूज इन आवर सराउंड, इन हिज माइंड. तो इसको जब मेरे पास लाया गया था, वी वर डायग्नोज इन डिसोसिएटिव, वी कॉल दिस डिसोसिएटिव डिसऑर्डर. हमने उसके फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया, दिस इज कॉल्ड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, डोंट वरी, डोंट टेक इट एनीबॉडी. और ये हर जगह, अगर इवन मैंने वहां पर भी देखा दिल्ली में, वी गो टू फीर फकीर्स, बाबाज एंड साधुस, वी ट्राई टू ट्रीट इट बिकॉज ऑफ स्टिग्मा टुवर्ड्स साइकेट्रिक इलनेसेस. वो लॉन्ग पेंडिंग थी ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ बाबाज. अनफॉर्चुनेटली उसके बाद उसको दवाई भी रखी गई थी और एंटी एपिलेप्टिक्स, विच मीन्स कि आपने उसको वो दवाई दी कि आपको लगा था कि नहीं जी कंफर्म है, इसको लर्न की तकलीफ ही है. और जो कभी कभी आप देखे सीजर डिसऑर्डर्स, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो ना एमआरए में भी या ईजी में भी नहीं आते हैं. ठीक है, तो उसको किसी ने डायग्नोज किया. तो मैं नहीं बोल रहा हूँ डायग्नोज गलत था और हमने सही किया था, पर अल्टीमेटली निकल के ये आया कि वो रोज गिरता है, रोज को सपने बहुत भारी आ जाते हैं, ड्रीम्स आर वेरी वेरी हाई. तो ये ड्रीम्स बाई चांस, मेरे एक जूनियर स्टूडेंट थे वहां पे, उसने बोला सर हम क्यों इस पे रोशाक या कुछ टेस्ट यूज करते हैं जो हमारे पास साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं. और मैं मानता हूँ कि शायद टीचर्स या पीपल वर्निंग इन द डिजास्टर मैनेजमेंट शुड नो दीज ऑल टेस्ट्स. एंड आई एम क्वाइट बिलीवर ऑफ दिस थिंग कि इनके पास बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे बच्चे को वो सबकॉन्शियस माइंड में निकाले. तो उसने वो यूज किया और मुझे दिखाया, जैसे उसने उसने पिकअप नहीं किया था इस चीज में स्टूडेंट ने कि उसको है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस. तो मेरे को कुछ हिंट्स लगे, मुझे लगा इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है. आई वेंट फॉर टू चेक इट आउट इन डिटेल कि इसको वाकई में. देन अल्टीमेटली वो बच्ची क्लास 6 में थी. हाँ, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कश्मीर में वी डू कुर्बानीज, वी कॉल इट कुर्बाना, हम लोग किसी बकरे को मतलब कट करते हैं. तो उसका वो ट्रॉमा हो गया था ब्रेन में. अंडरस्टैंड, आई मीन अब आप इस चीज को सोच समझे. ट्रॉमा ऑफ कटिंग ए बकरा इन ए होम वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर दिस गर्ल. एंड ये बहुत लंबा चला उसको, कम से कम 2-4 साल, और पीपल ट्रीटेड हिम ऑन द बेसिस ऑफ एपिलेप्टिक्स. तो दीज आर सम 2-3-4 केसेस. अगर आप मुझे केसेस गिनने को बोलो, आई कैन काउंट इट हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स इन हियर. तो बिकॉज वी डू इट क्वाइट ऑफनली, आई मीन सी इट क्वाइट ऑफनली. तो वो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर असल में उसको निकल के आया, वो बेचारा उसने उसको देखा था कैसे कटा हुआ था, और वही इसको रोज सपने में आते थे. और जब वो सपने में आते थे, कहीं ना कहीं वो अनकॉन्शियस हो जाती थी मॉर्निंग में, क्योंकि उसको डर लगता था कि ये कुछ ना कुछ मेरे को बीमारी हो रही है, बिकॉज वो बार बार याद आ रहा है. Now you all should know basically and understand. I take it the message from home. We don't, children do not report you the way we will report to a psychiatrist or psychologist or a teacher. मैं अगर रमीज से मिलूंगा एंड बोलूंगा रमीज मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, मेरे को मूड खराब हो रहा है, तकलीफ हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो आई विल स्पीक लाइक दिस वे. बट इट्स नॉट ऑलवेज दैट a child sitting in a classroom will report this particular way to you. And take this back home message that you have to understand that he will not report a classification of जो disorders होती है ना, anxiety के, depression के, that this way में बोलेगा कि मेरे को हो रहा है. What are the very very symptoms जो आप commonly बच्चों में देखते हो? They feel fearful. I mean they are sometimes feel like कुछ
इरेशनली कुछ होने वाला है, एंड वो उससे वो बहुत हिलते रहते हैं। लाइक समटाइम्स हमको मिसडायग्नोज करते हैं इनको ADHD है, लेकिन किसी ADHD वाले को हम पकड़ नहीं बैठते, क्लास में पूछते नहीं है कि एक्चुअली तू हिल क्यों रहा है, और हम उसको डांटते रहते हैं और बोलते हैं एक जगह बैठो, एक जगह बैठो, एंड वी ही नेवर एवर कम्स इन अ बेटर फील्ड इन फ्यूचर। सैडनेस से हमेशा आपको रिपोर्ट करेंगे, दे विल ऑलवेज रिपोर्ट यू बाय दैट दैट यू विल सी देम by saying that they're not interactive, they're not talking much actually with the kids, and they are just remaining like for an aloof for some period of time, and they will feel irritable. I mean, common causes उनको आप देखोगे, they will feel irritable about different things. ये मैं post डिजास्टर की बात बता रहा हूँ आपको, जो आपको शायद कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब भी आपको इरिटेबिलिटी इन बच्चों के अंदर दिख जाए, लाइक दे विल नॉट सिटिंग इन वन प्लेस ऑफ टाइम, नॉट टॉकिंग मच विद, दे आर टॉकिंग लाइक हटो जी, नहीं बात करनी है, जान दो, क्यों कर रहे हो ऐसा, यू शुड फील इवन टू फैमिली मेंबर्स कभी बोलेंगे कि जो हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, मैं भी कभी कभी लाइटली लेता हूँ, प्रोबेबली इन माय ओन सेटअप्स, बाय सेइंग दैट कि सर इरिटेट हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, फाइन। बट वी शुड नॉट मिस दिस बाय सेइंग दैट इरिटेबिलिटी इस अगर बहुत देर तक चलती रहे, इट इज अ सिम्पटम ऑफ शोइंग दैट समथिंग इज हैपनिंग इन दिस ब्रेन। डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड जब भी आपको बच्चा बोलेगा मैम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैम मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैम मुझसे नहीं हो पा रहा, या सर मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं इसको भूल रहा हूँ, फाइन, देयर इज अ हायर चांस ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग दैट ही डज हैव समथिंग इन हिज ब्रेन, जो हम बाद में शायद अगर सवाल भी पूछेंगे आप, बाद में मैं जवाब भी दूंगा। देयर कुड बी सम कोमॉर्बिड अदर प्रॉब्लम्स जो हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि दैट कि उसको कोई ट्रॉमा ही हुआ है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब कुछ और भी तकलीफें हो सकती है, प्रोबेबली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा अगर एग्जांपल्स आपने किसी ने कोड करनी होगी, कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो हमेशा रिपोर्ट करते हैं कि जी हमें कंसंट्रेट नहीं बन पाता है, लेकिन जब हम देखते हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो कंसंट्रेट भी ठीक कर पाते और लिखते भी ठीक है, लेकिन उनकी हमेशा शिकायत होती क्लासरूम्स में या जगहों पे कि दे कैन नॉट फोकस ऑन द बुक्स, पर वो लिखने में फिर बहुत अच्छे हो जाते हैं, उनके पेपर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, फाइन। तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आना चाहिए कि उसको रीडिंग का कंपल्शन है, उसको बार बार पढ़ने का मन करता है, इसलिए उसको लगता है कि मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। एंगर आउटबर्स्ट इज वेरी वेरी कॉमन इन देम, आई मीन यू नीड टू अंडरस्टैंड। लुक, जो सिम्टम्स मैं आपको बोल रहा हूँ, एंजाइटी, fearfulness, depressive moods, sadness of mood, sleep irritability, sleep disturbances, dreaming, higher side and bad sides, these are always have some comorbid psychiatric illness attached। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर बच्चे में होता है, लेकिन हर बच्चे के साथ कुछ ना कुछ सिम्टोमोलॉजीज हो जाने चाहिए। तो मैं एक बिलीवर हूँ जो बिलीव नहीं करता है कि हर कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम बच्चे में देखी जाती है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं गेस करना है कि इसके पास कोई ना कोई इफेक्ट होता है। नाउ what we see in natural disasters, like for example, यहाँ पे क्योंकि कश्मीर में मोस्टली फ्लड कहा आपने, आपने अर्थक्वेक देखे हैं बहुत हायर साइड से, यहाँ पे वो आपको डायरेक्टली इफेक्ट कर देते हैं इनकी। आप ये सिम्टम भी दिखते हैं आपको, साथ में आपको ये भी दिखते हैं कि वो अवॉइड करते हैं वो प्लेसेस, चाहे वो घर बोलेगा मैं वहां नहीं जाऊंगा, चाहे वो कमरा बोलेगा वहां नहीं बैठूंगा, जब वो कमरे शिफ्ट करते रहते हैं, अपने बिस्तरे शिफ्ट करते रहते हैं या बेड शिफ्ट करते रहते हैं, अगर वो हॉस्टल रहे तो बोलेगा इसके साथ नहीं सोऊंगा, यहाँ पे नहीं बैठूंगा। तो कहीं ना कहीं शायद हम लोगों को ये सिम्टोमोलॉजीज हमेशा बहुत बहुत ही अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगे, और ये समझना पड़ेगा देयर शुड कुड बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट दिस किड हैव डज हैव सम ऑफ द इश्यूज। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर अब ये बच्चा फॉर एग्जांपल बड़ा है, लाइक फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि जी आपने 7th 8th 9th क्लास का है, इट्स वेरी इजी टू वर्क विथ हिम एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विथ यंगर किड्स। अगर आप टीचिंग लाइन में देखेंगे, जो मेरे को लगता है पर्सनली, मगर टीचिंग लाइन में अगर छोटे बच्चों से ऐसा हो जाता है तो वो क्रैप कर पाते हैं अपने ब्रेन को। साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी सेज अगर वो 4th क्लास से बिलो बिलो होगा तो उसको बहुत कम चीजें फिर 4th क्लास की याद रहती है, लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो बहुत सारी बातें याद रहती है। एट द सेम टाइम यू शुड नॉट मिस that we do have stages of development, I mean you should remember that particular point, कब बच्चा किसकी कंप्लेंट करेगा, आपको किस बारे में कंप्लेंट करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो एज हायर साइड से होगा, 9th या 10th होगा या 12th एज का होगा, तो यू नीड टू पिक अप दैट कि वो किसके साथ ज्यादा बैठेगा। लाइक वो हम भी कभी कभी मिस डायग्नोज करते हैं कि वो अपोजिट जेंडर से कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, फाइन। तो दिस आर समथिंग जो शायद एज ए टीचर यू शुड लर्न एंड रीड अबाउट डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स, चाहे मॉरल डेवलपमेंट होगा, चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, चाहे हमारा क्या बोलते हैं इसको इमोशनल डेवलपमेंट होगा। सो यू वी हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स कि हमारे इमोशंस किस पर्टिकुलर एज में अपोजिट जेंडर पे जब जाते हैं,
किसी एज जेंडर पे अपने दोस्तों के साथ ही हम ज्यादा बैठना शुरू कर देते हैं. सो फोकस ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि वो भी आपको याद रहना चाहिए कि जो स्टेज हम पढ़ेंगे या देखेंगे या डिस्कस करेंगे, लाइक मैं क्लास 5th में हूँ तो मैं विल सिट बाय माय ओन फ्रेंड. हो सकता है वो फ्रेंड आपको बाद में यूज आ जाए थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको यूज हो जाए SCL की वजह से, आप उसको शायद उससे निकाल सकते हो कुछ बातें उनकी वजह से कि इसके मन में क्या चल रहा है, जरा आप एक बार देख लो. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी वाइल डेवलपिंग ए चाइल्ड. नाउ अगर वो एडल्ट होगा, अपर स्टेज का होगा, लाइक फॉर एग्जांपल हिज क्लास 12, क्लास 10 या क्लास 8, यू कैन पर्टिकुलरली यूज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी टू अंडरस्टैंड क्या चल रहा है इसके ब्रेन में. व्हाट्स द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, आई विल एक्सप्लेन मे बी जब इनफॉर्मली कभी हम ऐसे मिलेंगे. वी हैव टू डू सम फ्यू वर्क्स विथ यू, आई मीन फ्यू वर्कशॉप्स टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन. अभी मैं अगर ऐसे बोलूँ तो यू नीड टू अंडरस्टैंड. देखो हमारी जो सोच होती है, हमारे जो ब्रेन में चीजें चल रही होती है, थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, दिस आर ऑल लिंक्ड विद माय बिहेवियर. लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने हाथ हिला रहा हूँ, इसका मतलब न्यूरो सिस्टम जो मेरा ब्रेन का है वो मुझे ऑटोमेटिकली मोटिवेट करता है अपने हाथ हिलाने पे. फाइन. और मैं कैसा फील कर रहा हूँ अंदर से, दैट्स माय इमोशंस. व्हाट इज दिस, यू नीड टू फोकस दैट हमारा जो सोच है, दैट्स ऑलवेज लिंक विथ आवर. हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वो हम फील करते हैं. सो ये जो मॉडल रमेश डिस्कस कर रहा था, इसमें CBT का बड़ा ख्याल रखा गया है. Look, I mean, if you read the model itself, you will say this में CBT देखा गया कि is a workable model for development of these learning processes. How is it important? Because जहां आप बच्चे की सोच में देखेंगे, वो आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे छुप रहा, आपसे भाग रहा है, इसका मतलब उसका बिहेवियर में इफेक्ट पड़ा क्योंकि दिमाग में कुछ चल रहा है उसके. फाइन. वो रो रहा है, दुखी हो रहा है, वॉशरूम में भाग रहा है बार बार, तो उसका मतलब उसके इमोशंस में कुछ चल रहा है. सो जब हम इन दो सेटअप्स में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में जब हम दो चीजें ठीक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने सोच को ठीक करना है, वो सोच कैसे ठीक होगी वो मैं आपको बता सकता हूँ. वो बिहेवियर चेंज करना, जैसे हमारे कॉलेज में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं PT टीचर्स को. आप उनको बोल सकते हैं कि ये बच्चा बहुत सुस्त रहता है, जरा देख लो क्या मसला है. उसमें जो वो बिहेवियर इनपुट करेगा डिफरेंट वेज में, हो सकता है उसको मॉडिफिकेशन आ सकती है इन हिज बिहेवियर्स. नाउ व्हाट इज द बेसिक थिंग दैट वी शुड टेक बैक होम, कि क्या करना चाहिए एज एन एक्सपर्ट्स टू बी इन द फील्ड, जो हम किसी की हेल्प कर सकते हैं इन अ बेटर वेज. बेस्ट पॉसिबिलिटी इज दैट यू शुड हैव अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट इट, यू शुड लेट इट टू टॉक विद द किड. डोंट लेट द चाइल्ड सफर एंड पुट इट कि वो खुद ठीक करेगा या ये नॉर्मल चीजें हैं. मैंने बहुत बार, सॉरी टू से इट, बट टीचर्स को सुनते हुए देखा है, यार ये तो बहुत छोटी चीजें थी हमारे बचपन में. सो वेरी वेरी कॉमन इन आवर ओन चाइल्डहुड. I have seen in my room my teacher or somebody who is informant, like किसी का पापा साथ है, सर ये कौन सा बड़ा मसला है, ये तो हमारे साथ रोज होता है. हम तो बचपना वहां बिता चुके हैं जहाँ पे बर्फ थी, जहाँ पे मिलिटेंसी थी, जहाँ पे ट्रॉमा ही ट्रॉमा था, चोरियां थी, डकैती थी. बट टू मी ऑनेस्टली थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ. वी आर जेनेटिकली मेक, हमारा अगर पॉइंट, मेरा अगर पॉइंट, पर्सनल पॉइंट आप अगर पूछोगे, हो सकता किसी ने आपने सवाल में से पूछना है, जेनेटिकली हम लोग भी तो चेंज हो गए ना. मी एंड माई वाइफ आर हैविंग डिफरेंट जीन्स नाउ, जो हमारे पापा या परदादा के पास नहीं थे. तो चांसेस ऑफ माई चाइल्ड टू बी साइकेट्रिकली इल इज वेरी वेरी इजी. तो हम जब ये नहीं सोचते कि हम चेंज हो गए, तो हम बच्चों को क्यों बोल सकते हैं बहुत छोटी बात है, भूल जा. अक्सर मैंने यहाँ पे पेरेंट्स को बोलते हुए देखा, सर हमने इसको बोला दिमाग से बाहर निकाल दो. I mean, commonly I have seen people, even educated people, even from the very good background, doctors, engineers, ये कौन सा बड़ा मसला है जी, हमने इसको बोला छोड़ दो. ये जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बकरा वाला मैंने आपको कहा, कटा हुआ था उसके सामने ही, PTSD, वो उसके पापा ने सीधे बोल दिया उसको, बकरा तो रोज कटेगा, तो रोज तेरे को परेशानी हो जाएगी. I mean, commonly, what's the point? Point is that you people have to take this, that we should let it talk. I mean, जब बच्चा आपके सामने ये वाली बात बोलेगा ना, उसको बोलने दिया करें. You should engage them to share their concern and ask questions. I mean, don't let it to stop. बस कर दो जी, हो गया, हमें पढ़ना है, चलो मैथ कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं. Don't cut down it. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल रमीज इज हियर, मैं रमीज से बात कर रहा हूँ, मेरे को परेशानी हो रही है, मेरे को डर लग रहा है, तो रमीज मुझे बोल देगा चल चुप कर, तू पढ़ाई कर, मैथ निकाल.
तो यहाँ पे अपनी बात काट दी, वो कभी किसी टीचर से बात नहीं करेगा। और हमारे पास ही आके बोलते हैं, दे स्पीक इन फ्रंट ऑफ अस बाय सेइंग कि सर टीचर ने तो सुना ही नहीं था। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस जो अभी रमेश ने डिस्कस किया था, मुझे सवाल पूछा था ड्रग एडिक्शन क्यों हायर साइड से, मैं सच बता रहा हूँ, जब आप उनसे खुल के बात करते हैं ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ऑल साइकेट्रिक मेडिकेशन, बीट सुसाइड, बीट ड्रग एडिक्शन, or beats depression and anxiety, which is very high in Kashmir, is not because of the biological mostly changes, it's morely psychological ones. अगर आप यहाँ पे डॉक्टर वाले से बात करोगे, बोलेगा हमें तो कभी किसी ने प्यार दिया ही नहीं, हमें तो स्कूल में किसी ने बोला नहीं था ये करने के लिए, तो इसलिए मैं नशे में हल्का स्टार्ट हो गया तो इन्वॉल्व हो गया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये सब जगहें हैं जहाँ पे आप उनको बोलने दिया करें, आई मीन डोंट स्टॉप देम, अलो द चाइल्ड टू बी विथ यू ऑलवेज। जब आपको लगेगा कोई लड़का या कोई लड़की क्लास में आपसे अब खुलता है और बात करता है और बोलता है कि दैट आई एम हैविंग इश्यूज विद दिस एरियाज, तो आपको रोज मिलें फिर। मतलब व्हाट डज रोज मिलना मीन्स, रोज मिलना मीन्स कि आप क्लास में मिले, सराउंडिंग्स में मिले, लेकिन कोशिश करें उसे रोज मिले, बिकॉज वो आपको हर दिन एक ही दिन सब कुछ नहीं बोलेगा। He or she will never ever let you speak everything from the day one. Remember this. I mean, this is very, वो हल्का बोलेगा, हल्का सा हिंट देगा। पहली बार भले आप कपड़ों की बात कर ले, पहले भले क्या खाया क्या पिया की बात करें, आपका मूड कैसा है, जैसे रमीज ने स्टार्ट किया था प्रेजेंटेशन अपना, हाउ डू यू फील अबाउट दिस, तो दिस आर समथिंग जो शायद हमें करना चाहिए। नेक्स्ट डे पे आपका मूड कैसा है, ऐसा कैसा रहा कल का दिन आपका, आपके घर में सब ठीक था आज, कौन कौन किसने खाना बनाया आपके लिए, तो दिस आर वेरी वेरी नॉर्मल बात है जो आप शुरुआत में कर लेते हैं, एंड देन आप उस मुद्दे वाली बात पे आ जाते हैं जो आपको उनसे बात में निकालनी थी। लिमिट एक्सपोजर, जब भी आपके पास डिजास्टर आ गया, आई मीन एग्जाम्पल डिजास्टर हैपनिंग नाउ इन कश्मीर, मतलब यहाँ पे वो 2 मिनट के लिए मानो बाढ़ आ गई, तो हम वीडियो चला लेते हैं बाढ़ के, हम वीडियो चला लेते हैं जी कैसे वो इजराइल में बम ब्लास्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल, या कैसे कश्मीर में बम ब्लास्ट हो गया, हम लोग दिखाते हैं बच्चे को, देखो कैसे इसका पैर कट गया। मेरे पास एक बच्चा था, he came later stage पे, was above adult था, and he came out to be, and we call this anti social personality। और जब मुझे वो डायग्नोज एंटी सोशल पर्सनालिटीज बाद में जो समझ में हम लोगों को आया, लेकिन बेसिक उसका यही था कि उसके बाबा ने उसको बार बार बचपन में ये दिखाया था कैसे काटना है, कैसे पीटना है, कैसे मरता है कोई, कैसे हम किसी को ऐसे करते हैं, तो उसको लगा था कि वो उसे उसको महान बना देगा, लेकिन वो अल्टीमेटली निकल के आया कि जब भी उसको कोई बिल्ली मिलता था उसको काटती था, या कोई कबूतर मिलता था उसको काटना शुरू कर देता, पत्थर फेंकना लाइटों पे, ट्यूब लाइट्स पे, गवर्नमेंट सेटअप की बिल्डिंग्स में। तो ही केम आउट टू बी एन एंटी सोशल पर्सनालिटी विथ मल्टीपल सब्सटेंस ड्रग अब्यूज। तो लेकिन एंटी सोशल पर्सनालिटी पहले था, उसके बाद उसने ड्रग एडिक्शन स्टार्ट किया था। तो पॉइंट इज कि जब आप उसको लिमिट करेंगे, एक्सपोजर करेंगे, जो भी आपके मास मीडिया में न्यूज आते हैं अबाउट डिजास्टर, प्लीज वो आप बिल्कुल इनकरेज ना कर ले और फैमिली को भी एडवाइस कर ले। we have to understand that हमें teacher should actually be an unconditional love। I mean unconditional love term itself means कि आपके मन में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को उसको ठीक करना है या कोई अवार्ड लेना है, कुछ दिखाना है। इट शुड बी ऑन द बेस ऑफ कि हम उसे रोज मिलेंगे, उसको भी लगना चाहिए कि दैट हम मिल रहे हैं बिकॉज टू इम्प्रूव समथिंग, जो आपको पता होना चाहिए अंदर। मतलब मैं किसी बच्चे से अगर मिलता हूँ, मैंने एक रोस्टर बनाया है, उसका मिक्स किया है कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये देखना है, तो मैं इसको बोलता नहीं हूँ कि मुझे आपको ये चीजें कम करनी है। आई डोंट स्पीक अप कि मुझे आपको कल गुस्सा कम करना है, मुझे आपका मारपीट कम करना है। आई डोंट स्पीक अबाउट दिस थिंग। वो आपको लिमिट पता होनी चाहिए, पर आपको बोलना नहीं पड़ेगा उनको कि हम उस पर काम कर रहे हैं, बिकॉज जब उसको बोलते गुस्सा कम करेंगे तो उसको और गुस्सा आ जाता है, ये सोच के कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। फाइन, डू नॉट डिस्कस व्हाट हैपेंड टू यू। आई मीन दिस इज समथिंग जो आपको हमेशा इंकरेज करूंगा मैं बोलने के लिए। I mean, आपको वो बात बार बार रिपीट नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपको कुछ बातें अपने आप को बोलनी है कि मुझे चेंजेस कहाँ से लाने हैं, कहाँ से तक कुछ इश्यूज ठीक करने हैं, लेकिन ये नहीं बोलना है कि जी कल आपने क्या बोला था, परसों आपने क्या बोला था। वो कभी कभी वो बात नहीं करना चाहेगा। लाइक मैं आपको बोलूंगा रमीज को कि मतलब मुझे अब्यूज हुआ है, तो मैं बार बार अब्यूज के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। कैसे हुआ था, कब हुआ था, कौन था, टाइम क्या था, क्यों था। आई शुड नॉट टॉक अबाउट इट। सेम विद डिजास्टर के बारे में बार बार नहीं। आपने उस टाइम देखा था जलजला कितना हुआ था, कितना लेंथी था, आपने बाढ़ देखी कितनी बड़ी बाढ़ थी। यू शुड नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज उसको कहीं ना कहीं वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बार बार आते रहते हैं। Look, I mean, now there could be some
thing that you people will ask me about suicide, for example, I will answer 2 or 3 things, and then you can ask please questions. Please do ask questions. I will answer it one by one. But the important is कि suicide is a, हम लोग suicide को in general, आप सब लोग शायद सुसाइड को इस वे में लेते हैं कि क्या कहते हैं इसको, कि ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम में दलदले में फंसा हुआ है. मेरा हमेशा बिलीफ रहा है कि सुसाइड इज अ वेरी वेरी इम्पल्सिव थिंग, एंड हम नॉर्मल इंसान कुड गो फॉर ए सुसाइड, because you should understand the human mechanism of a brain. I mean, this is all games of neurotransmitters, fine. और वो इम्पल्शंस जब हमको आते हैं ना, वी गो फॉर दिस इम्पल्शन. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा नाम देते हैं कि जिसको भी सुसाइड दिमाग में किया या अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, इसके दिमाग में कहीं डिप्रेशन है, कहीं एंजाइटी है. तो मैं एज ए टीचर आप लोगों को प्लीज एडवाइस करूंगा कि उसको प्लीज आप डिसग्रेस ना कर ले. जब भी आपको कभी ऐसा कुछ लगा, क्लास में किसी ने कुछ बोला, उसको मत फटाफट आप इनका कॉन्शियस करे कि तू साइकियाट्रिस्ट से मिल, तेरे को दवाई की जरूरत है, तो दवाई खानी पड़ेगी. डोंट यूज दीज वर्ड्स at all, please. You can say that he is my friend, I have talked to him, he will meet you at this particular place, just go and see him. एंड उसमें अगर आप छोटा मोटा, हम लोग अक्सर देखेंगे, अगर फॉरेन कंट्रीज में आप देखेंगे ना, हर स्कूल में बेसिकली, इससे पहले भी रमीज से बात हुई थी, हर स्कूल में एक साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ की एक डायरी बनती है अलग से. मीन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वाला पार्ट ऑल्सो, कि उसका स्टार्ट बचपना कैसा रहा, उसके डेवलपमेंट्स कैसे रहे, एंड हाउ इज मैनेजिंग नाउ विथ इमोशंस, कॉग्निशन एंड विजुअल बिहेवियर वाइज. तो उसी में अगर आप मेंशन कर देते हो, वो कॉपी बंद कर देते हो, किसी इन्फॉर्मेंट को साथ में देते हो, मम्मी या पापा को, तो उसको पता ही चलता बच्चे को मेरे को क्या प्रॉब्लम्स है. सेकंड पॉइंट, नाउ जो सारे इम्पल्स आप बोलते हो, इसमें कुछ लोग आप देखेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे कि कुछ हमारे क्लास के बच्चे ना सेल्फ हार्म करते हैं, वो उनके बाजू में कट लगे हुए होते हैं, चाहे वो डिजास्टर से पहले या डिजास्टर के बगैर. ठीक है, देखो सेल्फ हार्म is very different than cutting, different than suicide actually. You should understand this. अगर आप हर किसी को हर दिन किसी बच्ची या बच्चे के हाथों पे आर्म पे देखते हो कि उसका सेल्फ हार्म हुआ है, आप हमेशा दिमाग में ये ना रखें कि वो उसको सुसाइड की टेंडेंसी हायर साइड से. लेकिन अगर आपकी क्लास में कोई बोल रहा है या किसी ने बोला, ये रोज बोलता रहता है मैम कि मुझे खुदकुशी करनी है, तो आपने उसको बहुत सीरियस लेना है. बिकॉज लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया किताबों में कि जो बोलता है वो कहीं ना कहीं करता है. लेकिन अगर वो सेल्फ हार्म करता है, तो उसको इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होंगे, इसको जो वो छुपा रहा है आपसे, वो निकालने की कोशिश करनी है. एट द सेम टाइम अगर वो नहीं है, घर में टेंशन है कोई, या बाहर कोई स्ट्रेसफुल लाइफ है, या पर्सनल लाइफ में कुछ बच्चे में इश्यूज है, तो वी कॉल दिस एज अ पर्सनैलिटी इश्यूज. प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी मैं नेक्स्ट टाइम कभी ऑफलाइन मोड पे हम लोग मिले, वी कॉल दिस पर्सनैलिटी, एंड दिस पर्सनैलिटी इज कॉल्ड बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी ट्रेट्स. लाइक अगर मैं एज एन एडल्ट हूँ, सेल्फ हार्म कर रहा हूँ, बार बार हाथ कटने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इसमें मजा आता है. आप देखेंगे वो बच्चा हमेशा बोलेगा आपको, सर खून देख के बहुत मजा आता है. तो आपका गेस कहीं ना कहीं जानना चाहिए कि इसकी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी हो सकती है. व्हाट डज बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी मीन्स? बॉर्डर लाइन पर्सन, उसको रिपोर्ट्स आएंगे, वो घर पे गुस्सा करता है, वो इमोशनली बहुत अनसूटेबल है, वो सेल्फ हार्म करता है, वो अनडिसाइसिव डिसीजंस लेता है, और वो क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल रिलेशनशिप में जाता है, कभी किसी को चूज करके छोड़ देता है, फिर दूसरे से रिलेशनशिप में चला जाता है. तो ये 5 सिम्टम्स जब भी आप किसी के अंदर देखें, इट्स बेटर, पहले तो मैं टीचर्स आप लोगों को बोल दूं, आप खुद सेफ रहे. अगर आप एडल्ट को हैंडल कर रहे, क्लास 12th की लड़की या क्लास 10th की लड़की, तो आप ये चीजें रिपोर्ट कर ले अपने एक्सपर्टीज से, बिकॉज आपको भी फंसने के चांसेस है. और मैंने अभी रिसेंटली कुछ 2 केसेस देखे थे, जो टीचर ही फंस गया था, बिकॉज वो लड़की क्लास 12th की बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी टेस्ट में थे, उसने ब्लेम किया था कि वो टीचर मेरे को छेड़ रहा है, जबकि टीचर उसकी हेल्प करना चाह रहा. अगेन यहाँ पे पॉइंट है कि जब आप हेल्प करोगे किसी को, वहां पे आप कितना अपने आप को सेफ रखेंगे. यू शुड ऑल्सो टॉक अबाउट दैट. मतलब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे टीचर सुन रहे हैं हमको, कहीं मैं 12th क्लास का लड़का हूँ और कोई मुझे मैडम बार बार मिल रही है, मुझसे बार बार बात कर रही है, तो आई शुड वेरी वेरी क्लियरफुल अबाउट कि मैं उस पर ब्लेम भी कर सकता हूँ.
how to tackle that वाला part, I mean you should actually focus and discuss it because you have to be safer. इसलिए मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूँ जो वो साइकोलॉजिकल डायरी वाला पॉइंट ऑफ व्यू है वो अगर लिखा जाए, आपने कहीं लिखा होगा, कहीं मेंशन किया होगा, या आपने टीचर से, फॉर एग्जांपल हेड मास्टर से, टीचर से बात कर ली कि जब मुझे लग रहा है इसको ये वाले इश्यूज है, जरा आप बात कर ले, क्योंकि मैं फीमेल हूँ, मैं बात नहीं कर सकती हूँ, तो वो ज्यादा यूजफुल होता है. जैसे हम लोग भी जब जब लगता है कि हमारा कोई पेशेंट हमारे पास या क्लाइंट हमारे पास आता है जिसमें हमें देखता है कि ये वाले ट्रेड्स है और वो खुदा न खासा कल मेरे को ब्लेम कर सकती है, तो हम हमेशा बोलते हैं हमारे फीमेल काउंटर पार्ट को, प्लीज जरा आप देख लो, मुझे ऐसा लगता है कि दैट ही कुड डू लाइक दिस पर्टिकुलर वे. तो एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स टू बी इन द सेफर साइड बिफोर डीलिंग दीज थिंग्स. Maybe I have done almost everything that I have written for you people. I will take the questions, and I hope Ramesh and me will take the questions. I know, I mean, a lot more to speak about it, lot more to discuss about it, but you know, as you can see me, I'm in the hospital, sitting in my car to make this possible to talk to you. I may sound a little bit awkward because अगर मैं वहाँ बैठता तो वहाँ patients आते रहते और मुझे बहुत disturb करते रहते शायद, इसलिए मैं बाहर निकल गया, गाड़ी में बैठ गया. Thank you so much, sir. And I think there are a lot of questions that people have posted. One thing that I wanted to ask you was a lot of people are asking for you that where is it that they can see them for see you for their kids. So can you please let I them know how they can get in I'm in contact? GMC Baramulla. My room number is G5. If somebody is from the Baramulla side, please do visit GMC Baramulla. I don't know it's allowed to put a number, but Ramesh does has my number. Please take number from Ramesh. It's room number G5, GMC Baramulla. My OPD is on Mondays and Wednesday. And if you want to come without OPD, you want to see me, please do message me before coming to this place because हमारा कभी कुछ classes होते हैं, बाकी चीजें होती है, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. मतलब कभी क्लास होती है, जैसे अभी मेरा वार्ड राउंड है, तो आई विल नॉट बी अवेलेबल इन द सराउंडिंग, सो प्लीज डू मैसेज बिफोर कमिंग टू दिस प्लेस. Thank you so much, sir. Thank you, and thank you for joining us from your car. And I know you've been quite busy; even we have not been able to speak. So thank you so much. So now let's move on to the question answer session. The other experts have also joined. So what we can do is, obviously there are so many questions. So I will club the questions and take only relevant ones, and then we can see which expert wants to address the question. I think the first question is how can child's emotions be understood by their silence? So, this is the first question that how can we interpret their emotions from their silence? Can I take it? I mean, Ramesh? Okay. Yes, please. Look, I mean, I hope I have already conveyed message to Ramesh when he spoke about this wala webinar. I told him that it's always better to have it after offline mode. I wish I can visit to the place that we are speaking from. Look, I mean, there's a lot of ways to understand the silence. Basically, I mean, you like I do. जब भी मुझे लगता है कि somebody complain about that this kid is not speaking to this for a long period, we call this a selective mutism. Like to me only, like you need to understand, very important, this is a very important point, it's very commonly seen in school पे setup. मैं student हूँ, मैं रमीज से बात नहीं कर रहा, I'm not speaking to Ramiz only, and I will speak my mother, I will speak my friend, I will speak to everybody. Fine, you should think about that. He does have some, we call it selective mutism. मतलब कुछ लोगों को गिने चुने हुए लोगों से बात नहीं करते हैं. फाइन, तो जब भी गिने लोगों से बात नहीं करते, ऑल्सो साइकोलॉजिकल इश्यूज, उनको लगता है कि इससे बात करने में कोई डिफिकल्टीज आती है. तो जब भी ऐसा होता है कि वो बात ही नहीं करते किसी के साथ और चुप चुप बैठते, तना बैठते, इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव हिम 2 pages. One page is about to let him to draw a male figure and mention that, try to mention him by asking के ये आपके क्या रिलेशनशिप में लगता है, व्हाट डज ही लुक लाइक टू यू, आई मीन, तो वो मेंशन करेगा. एक तो मेल पिक्चर बना देगा, उसमें वो लाइक करेगा, शो करेगा. फाइन. सेकंड, वो क्या बोलते हैं इसको, आप फीमेल पिक्चर भी बनवा दो, उसमें भी बोल दो ये कौन है, वो टीचर का बना लेंगे, और वो पिक्चर पे डिपेंड करते से. अब जब हम इंशाल्लाह मिलेंगे आगे जाके कभी ऑफलाइन में, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट डज आंखें मोटी मीन्स, व्हाट डज कान मोटे मीन्स, व्हाट डज गुस्सा मीन्स. तो उसको हम इंटरप्रेट करते हैं एज साइकोलॉजिकली कि ये किसके बारे में कन्वे करना चाह रहा है.
तो वो जो सिलेक्टिव म्यूटिज्म या अगर वो चुप चुप बैठता है उसको वो फिगर आउट कर सकते हो, आप उसको बोल सकते हो, आप बना के दिखा दे, उसके बारे में लिख दे, ये आपको क्या लगता है और क्या कर सकता है आपके साथ, फाइन। तो वो जो बच्चा नहीं बोलता है कहीं ना कहीं वो उस पर निकाल देगा, छाप डाल देगा। और अगर वो नहीं भी बोलता है, फॉर एग्जाम्पल अब कोई टीचर बोलेगा सर वो बोला ही नहीं 2 दिन 4 दिन 5 दिन 5 दिन, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, बहुत बार पेजेस दे दिए, बहुत बार लिख नहीं रहा है, शुड नेवर टेल हिम तुम बोलता क्यों नहीं है। नेवर एवर फोर्स समबडी टू तू लिखता क्यों नहीं, तू पढ़ता क्यों नहीं है, तू उस पर लिखना कुछ, ये कौन है। वो खुद ब खुद 4 5 6 7 8 बार बना के कुछ ना कुछ के बारे में एक्सप्लेन करता रहेगा। दिस कुड बी डन इन ए स्कूल सेटिंग जहां पे उनको बनाना बहुत इजी लगता है। तो वी कैन अंडरस्टैंड ए किड विथ ए म्यूट मोड only because when he writes something about or something drawing about it. This is my understanding till I have seen what while dealing with the people जो अब बोलते नहीं है। Thank you, But sir. at the same time शायद मैं mention कर दूं because at the same time you should not miss out there's type of personality we call this as कि वो बच्चा ऐसा ही है, उसका मेकअप ही ऐसा है, और वो आपको अगर कंफर्म करना है कि इसका मेकअप ही ऐसा है, बचपन से ही ऐसा है, वो बहुत कम बोलता है दूसरों के सामने, तो यू शुड थिंक अबाउट दैट कि उसकी प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी ऐसी है। प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी मतलब ये तकलीफ नहीं है, ये ऐसा ही है, तो वो कंफर्म कर सकते हैं आप स्कूल वालों से, फाइन। अगर घर या ना घर वालों से, अगर घर वालों ने बोला नहीं सर कुछ दिनों से हो रहा है, देन यू शुड थिंक अबाउट समथिंग प्रॉब्लम इज देयर। अगर वो बोलेगा नहीं बचपन से ही ऐसा है, देन यू शुड एक्चुअली रिथिंक अबाउट इट। ठीक है जी। Changes in the behavior, understanding the changes in behavior is very, very important here. Rightly you told. Yeah. Dolphy, I want to just chip in with a case study, with a case study kind of thing. We did. I don't want to name the girl. A girl enrolled in class 7th, and with the age in the age group of almost 20, 21. Ideally she should have been in higher grades and all. And when she joined and the beauty of our education system in Kashmir, in fact in whole India, is that we have started a drive called out of school children, where we want to rope in all children who have by some means left the school education system, and now they are being brought back into the mainstream education system. And the girl that in question I'm talking about, she came to the school, I mean, visibly and very obviously not in the suitable to that class, to that grade, but she joined the school, and in the first couple of weeks completely silent, as Dr. Mudassir was talking, that completely silent, nobody knew that what's going on with her. And I was very interested to really understand that why is she mute, and why is she selectively not been able to talk to any of the teachers or students. And after a couple of days, when I started talking to that girl and found out that she had a very terrible family situation, wherein her mother had died, and now her father was actually, she was not living with her father, now living with her with grandmother, maternal grandmother. And because of all those circumstances, some circumstances which I was not able to really decipher, because I was not that professionally, sound a person to really dig into the whole psychological thing. But I just tried to really open her up by giving her a small amount of time each day to talk, and we gave her a position, we gave her a chance, to act age appropriately, not like treating not like a kid, because I knew that biologically and psychologically she was not in that suitable to that age group, to that grade. Now she started behaving as somebody who was given a position to really speak and control the students and manage and take the leading role as a decision maker. And you won't believe, I know that a couple of teachers who are in the as participants, they are already aware of the case I'm talking about. And after 1 month, I could see tremendous amount of change in that girl. The girl taking charge of the whole school, talking in the morning assembly, talking to all the children. And I think at times I felt that she is more than vocal in her daily transactions. So that was amazing. This
this case and maybe a couple of other cases also, because of certain things, age appropriate issue, that child is, because of some issues, he had left the school and then joined back, now in his teens, maybe in his 20s, now trying to cope up with the children who are much younger to him, that kind of complex with the child and dealing with the younger children. So these are the issues, wherein we have to really, like Dr. Mudassir said, that we have to really dig deep and try to make the children understand, rather make the children speak actually, and open up through some means, by some techniques and tools, so that some professional help can really reach to them if required. Thank you. Thank you, sir. And there's another question. They are asking about differently abled children and how they can be roped into social emotional learning, how social emotional learning can be used to help differently abled children. Look, the first thing that you need to understand is जो आपकी knowledge अभी है about the special able children is which I can basically explore upon. I mean, you need to understand special able children, or we call the special children, maybe बहुत differences है inside the two. You need to call them as Down syndromes, we call them as intellectual disabled, we call them autistic disorders, we call them learning disabilities. So सबसे पहले इन स्पेशल एबल चिल्ड्रन में जब हम देखते हैं, we need to actually understand that कि ये एक सेटअप नहीं होता है. There could be some comorbid psychiatric illness in between the two, I mean 3. सब में एक भी हो सकता है, किसी में 2 भी हो सकता है, किसी में alone भी हो सकता है. तो हमेशा बेस्ट होता है कि आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो ये स्पेशल स्किल्स होते हैं, जब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करेंगे, उनका आईक्यू कितना होता है. Their IQ is always lesser than 70. I mean, this is in the definition of special disability में जो सेक्टर होता है, उसमें जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, पहला टर्म यही होता है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उनका IQ लेस देन 70 होता है. व्हाट्स नॉर्मल IQ इज 90 to 110. और ये जो IQ होता है बेसिकली इज हाउ यूर एक्चुअली मेंटल फंक्शनिंग जो आपकी होती है, और जिसको हम रिलेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एज एंड इनटू 100 करते हैं. लाइक कुछ टेस्ट हम यूज करते हैं जहाँ पे हम लोग उसको असेसमेंट करते हैं, उसका मेंटल एज कितना आ रहा है. नीचे हम लोग उसमें देखते हैं कि उसका क्रोनोलॉजिकल एज कितना आता है, और उसके बाद 100 कर लेते हैं मल्टीपल. फाइन. तो उससे हमें IQ समझ में आता है. तो अब आप बोलोगे ये मेंटल एज कैसे निकाल, तो उसके बाद बहुत सारे टूल्स बने हैं. देयर नियर अबाउट 1000 ऑफ टूल्स इन द वर्ल्ड जो हम यूज करते हैं. फॉरेन में कुछ और यूज होते हैं, हिंदुस्तान में कुछ और यूज होते हैं. हमारे कंट्री में जो यूज होते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अमेरिकन टेस्ट. तो आपको समझना पड़ेगा, जब हमारा स्कोर लेस देन 70 आएगा तो आप उसको बोलेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है. और उस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर भी सब कैटेगरीज होती है. फाइन. ये मैं क्यों बात छेड़ रहा हूँ, बिकॉज टीचर शुड नो ऑल दीज थिंग्स इन अ सेंस दैट वी ऑल शुड नो अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज टू हेल्प देम. जब हमें पता है कि अब उसमें रेंज होते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर एंड प्रोफाउंड. फाइन. माइल्ड वाले को हम हेल्प कर सकते हैं, और मॉडरेट टू माइल्ड वाले को हम हेल्प अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन सीवियर वाले में आपको बहुत कम इंप्रूवमेंट्स आने के चांस होते हैं. सो ये सवाल का जो जवाब है ना, यू शुड नो द रेंज कहाँ पे वो लाई कर रहा है. और माइल्ड टू मॉडरेट एज पर द बुक्स आर सेइंग कि वो 12 तक भी पहुंच सकता है. कुछ जो उसके हायर रेंज होगा, नियर अबाउट द बॉर्डर लाइन रेंज, जिसका IQ होगा, बॉर्डर लाइन रेंज इज 70 to 79 एंड 80 to 89 इज एज पर द ICD इज डल. जो मेरा भी IQ हो सकता है डल. किसी का 110 से ऊपर, 190 से 110 का ऊपर हो गया तो वो हो गया अबो एवरेज. एवरेज होता है 90 to 110, 80 to 89 होता है डल, 70 to 79 होता है बॉर्डर लाइन. फाइन. अब जो कोई बॉर्डर लाइन टचिंग करता है ना, वो 12 तक जा सकता है, तो उसको आप उसी हिसाब से हेल्प कर सकते हैं ना. अगर आपको लग रहा है कि जी वो सीवियर है, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि दैट आप जो काम करेंगे वो किस लेवल तक जाके कर सकते हैं. तो आप तभी उनकी हेल्प कर सकते हो जब आपको ये सब रेंज पता होने चाहिए, और आपको ये एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए. एक्सपर्ट से मिलने, जो आपका लोकलिटी में होगा, वो आपको बता देगा कि वेयर यू कैन वर्क फ्रॉम. पहले हम देखते हैं यूजुअली हम लोग को सबसे पहला होता है कि जो मेरे को लगता है पर्सनली, हम देखते हैं कितना कर पाते हैं, व्हाट ही आर शी हैज अचीव टिल नाउ. लाइक जुबान बोलने में कैसे है, चलने में कैसे है, उठने में कैसे, बैठने में कैसे हैं, बिहेवियर वाइज कैसे हैं. तो उसके बाद ही वो रोस्टर बनता है, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं इन डेप्थ वेज में, स्पेशल एबल किड्स में. लेकिन मेरा कहने का मतलब, सवाल का जवाब का मीन्स ये है कि दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया ऑफ देम फर्स्ट, एंड देन टू अंडरस्टैंड कितना कर पाएंगे, एंड देन हाउ आप कैन अपलिफ्ट देम.
और वो शायद तभी अब इट इज नो वन वे ऑफ हेल्डिंग इट, लाइक नॉर्मल्स में इट्स वेरी इजी में, जैसे मैंने बोला बोलना शुरू कर दो, उनके साथ बैठना शुरू कर दो, इट्स वेरी इजी टू से इट। बट स्पेशल एप्स में कि हम लोग ऐसे नहीं करते, हम पहले देखते हैं कि वो कितना कर पाता, कितना कर पाएगा, कितना इसका एनर्जी है, कितना आईक्यू है, कितना घर वाले समझ रहे इस चीज को, तो सब चीज को मिला के हम उसका मैनेजमेंट प्लान बना लेते हैं। Right. Thank you, sir. Ramesh, sir, do you want to add anything to this? I can just say one thing, because Dr. Mudassir is closely associated with the. I mean, we have a school differently for differently able, run by Indian Army, and together with Department of Education, and he's keen and very closely working with that school, Parivar School in Baramla. And if the lady, I mean, if who asked this question, any gentleman who really is interested to understand and take professional help or seek the for schooling, some guidance and facilitation in that school, I think you can meet him, and you can go and maybe talk to and take the help of that school. In fact, they are doing wonderful job. In fact, I visited that school yesterday, day before, and so these are the options. But yeah, differently able children and their SEL is altogether a different thing. And because we are now working, so far we are working now with the children who are in the mainstream schools. So if we are able to really, and if somebody is interested to really work on this area of SEL, development of SEL framework or SEL guidelines, or any practical, I mean, module for these children, and especially in our context, say in the context of Jammu and Kashmir, I think he can really come forward and really start working it. Because I have my own journey, and why into this, and why into disasters, and why into emergencies. So a person can really take help, and like Dr. Mudassir said, that you can always seek professional help, and try to build upon your own, understanding of what's going around in within you and around you, and in the schools or any workplace where you are working. So it's important that we can think about this area. But right now, I think it's in the very nascent stage, and done quite differently and professionally. So, but if you can really take care of SEL frameworks, and any kind of document, any kind of framework for these mainstream school education system schools, I mean, students, for those students, it will be really helpful. And then we can really go on and talk about the children with special needs also. Yeah. Right. Ah. Thank you, sir. That's a Rana, sir, wonderful you wanted to explanation. add Yeah, something? I would like to just confirm that it's time, we are going beyond time, and we Yes. have to complete the conclusions also, because experts here are with very tight timeline schedule. Dr. Saab is also here, so better to take one or two last question, and after that go Yes, forward. sir. There's just one question that is left, and I think it's a very important question. So this is the last question. So somebody has asked that how to educate teachers to allow children to come to the school counselor and not turn this entire subject into a taboo. And also, I wanted to ask that is there a provision of school counselors in every school? If not, then where can the teachers send the kids or the parents go with the kids? So, yes. Yeah, Dr. Mudassir can go ahead. I'm a quite believer of saying that when we joined back to this place, we started one course called empirical clinical psychology in the Department of Psychiatry in GMC Srinagar. I was working in GMC Srinagar before joining to DMC Baramulla. So purpose of this opening of a school was that we will produce more and more clinical psychologists in practice actually. And unfortunately, that day, before thinking of making this possible to this Kashmir Valley, we were thinking that we could adopt a school mental health program in Kashmir. Unfortunately, if anybody, people sitting here, or anybody who is very close to the government or talks about it quite oftenly, I'm a good believer of practicing that we need a school mental health program. And then, I mean, trust me, it's going to be very successful. I mean, all the genetical makeups and genetical things that keep on happening to all of us in the later stage only is because of childhood experiences. So I believe that जो हम टॉपिक बात कर रहे हैं ना अभी 11 बजे से,
आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लाइक इट्स ऑल आर मेकिंग sensitize to people and you are letting people know about disasters, how to manage, जैसे how to develop emotions and how to develop behavior in a positive senses. but ultimately हम जो एक चीज लैक कर रहे हैं probably in Kashmir is only child mental health program, I mean school mental health program. आई थिंक जिस दिन वो स्टार्ट हो जाएगा तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए ना। इन्होंने कुछ वोकेशनल काउंसलर्स को रखा है स्कूल में। I don't know whether they are professionally trained about the psychological issues or not. I mean, पर अगर वो उसके बदले साइकोलॉजिस्ट को भी ऐड कर देते शायद, मे बी अपकमिंग गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट इट और रमीज विल एलॉबरेट द कंसेप्ट्स। बट असल में ये प्रोग्राम करने का मतलब ये कि अब नहीं है तो हम लोगों को ही करना पड़ेगा। और जैसे उन्होंने कहा कि हम कैसे भेजे स्कूल काउंसलर के पास, मुझे लगता है कि उसको उनको पहले खुद ही एक्ट करना चाहिए एज ए स्कूल काउंसलर रादर देन कि हम उसको भेजें किसी के पास। लाइक आप हर एक को बोलोगे कि जीएमसी बारामूला में जाओ, डॉक्टर मुझसे मिलो, दैट्स गुड फॉर मी, माय प्रोफेशनल हेल्प, मगर एट द सेम टाइम आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे थोड़ा सा खुद बात करने की, खुद निकालने की या खुद लर्न करने की, तब तक आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं। तो ये शायद पहला पॉइंट होगा जो मैं एडवाइस कर लूंगा, शुरू कर ले अपने आप से कि दैट आई कैन टेक दिस अप एंड आई कैन टेक दिस एज अ चैलेंज एंड आई कैन मैनेज दिस गाय और दिस गर्ल इन ए प्रॉपर सेंसेस। जब आपको फिर लगता है कि नहीं जी नहीं हो पा रहा हमसे, then you can take a professional help from anybody, beat me anytime. I mean, my number is available 24/7. You can message me anytime. I can add up मैं यहाँ से ही फोन कर दूंगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल दे, सर हमें बात करनी है आपके साथ, मैं यहाँ से आपको वापस फोन करूंगा। बट द पॉइंट इज कि अगर वो स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट है कहीं पे, नाउ देयर आर फ्यू स्कूल्स इन श्रीनगर और जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे उन्होंने कुछ अपने काउंसलर्स को अडॉप्ट किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे आर वेरी वेरी बिग स्कूल्स, पर हर स्कूल में नहीं है। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि हर स्कूल में नहीं है, और मेरे को लगता है कि होना चाहिए फ्रॉम somebody from a psychological background who knows, who does। एट द सेम टाइम आप किसी को बोलोगे कि जी मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, आप आ जाओ, आप हेल्प कर लो, तो रमीज भी अग्री करेगा इस बात पे। अगर रमीज 1000 साइकोलॉजी पढ़ लेगा लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेगा साइकोलॉजी को, तो वो कभी यूज नहीं कर पाएगा इस चीज को। तो मेरे को लगता है कि प्रोफेशनल्स की हेल्प लेना शायद बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले ट्राई कर ले। अगर आप डिफिकल्टी हो रहा है तो आप फिर में हमसे बात करवाएं या उनके घर वालों को बोले कि इनसे बात कर ले। जरूरी नहीं मिल के आ जाने की, पर वो मैसेज पे भी बात चल सकती है, व्हाट्सएप पर भी बात चल सकती है, तो वैसा भी हम हेल्प कर सकते हैं उस चीज को। मैं एक चीज सॉरी मैं एक चीज ऐड कर दूं, बिकॉज हमारी प्रैक्टिस श्रीनगर में भी, मैं डू प्रैक्टिस इन श्रीनगर आल्सो 1 day or 2 days। आई एम सीइंग ए क्वाइट चेंज नाउ इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। आई मीन क्वाइट ऑफनली अगर आप देखेंगे 10 से 20 लोग बाहर गेट के बाहर खड़े हुए हैं दिखाने के लिए, तो उसमें से यंग बच्चे वही से आते सर हमें आपसे बात करनी है। सो मैं ये भी एग्री करता हूँ कि आप कश्मीर इज चेंजिंग, पीपल आर कमिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड दिस अ गुड साइन फॉर ऑल ऑफ अस। एंड आई होप बारामूला में भी चीजें ठीक बेटर हो रही है। और कोई अब हम डिस्ट्रिक्ट रूरल डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो बेटर है कि इस टीचर को थोड़ा बात करनी चाहिए। कभी कभी मैं भी मिलने गया था, ये अच्छे इंसान है, मैं इनसे मिल चुका हूँ, एक बार मेरे दोस्त है, एक बार मिल के देख लो, ठीक है। तो या मेरे फ्रेंड है या मेरे बैचमेट है या मेरे क्लासमेट है, आप इनसे बात करके देख लो। तो जैसे वो नंबर देंगे या मिलाने की कोशिश करेंगे तो हम उनसे समझ जाएंगे कि क्यों आए होंगे हमारे पास, शायद वो ऐसा हो सकता है। Thank you, sir. And I think with this, we are at the end of the questions and answers. Thank you so much to both the speakers and especially Dr. Mudassir कि वो कार में बैठ के वो कर रहे हैं एंड सबके क्वेश्चंस अच्छे से उन्होंने एड्रेस किए हैं। एंड सर वन थिंग आई थिंक डॉक्टर आकाश से ही पूछती हूँ ये क्वेश्चन, लॉट मैं ऑफ पीपल आर सॉरी आस्किंग। मैं आपको जो लोग वेट भी कर रहे हैं ना, इसमें ऑल मोस्टली फ्रॉम टीचर्स ऑफ कश्मीर। देखो इससे रमजान गोइंग और रमजान का महीना चल रहा है, और हम सब लोग अभी जो टाइम होता है ना नमाज का टाइम होता है मैक्सिमम जगहों पे। सो इट शोज मी वेरी गुड कंसर्न, कितने हम लोग बैठे हुए हैं, हिल नहीं रहे हैं नमाज के बारे में, वो नहीं बोल रहे कि नमाज लेट हो गया, उसके बाद भी हम लोग आपको सुन रहे हैं या बता रहे हैं या सीख रहे हैं। दिस शोज कि हम लोग सीरियसली इस पे काम करना चाहते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि रबीज ने मुझे आप सब लोगों से मिलाया, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारा एसोसिएशन और बनता रहे। कभी भी किसी को मेरी हेल्प चाहिए और मेरे को वहां बुला ले, कहीं भी बुला ले, मैं बहुत मूवेबल हूँ, ठीक है। मगर विथ परमिशन की जो पहले ही पता होना चाहिए कि हमारे शेड्यूल में ये होने वाला है प्रोग्राम। थैंक यू मैम, लीविंग नाउ, आई होप इट इज फाइन टू लीव। Yes, yes, sir. Yes, Please, yes, please go ahead. obviously. Thank you, Thank Kumar you. Yes, sir. you can go Thank ahead. you, Kumar sir. People from National Institute, thank you very much. Disaster management से and the host
I mean, thank you, Dolphin. It's nice to meet you. Hope Sir, to meet thank you very you. soon. Thank you. Bye. Yes, Yeah. sir, definitely. So we'll be in touch with you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Right. Yes. So as I was saying, Raka sir, a lot of people want to get in touch with you or maybe Ramesh sir या मुदस्सिर sir के साथ ही हमेशा होता है. तो can there be one maybe number or email ID where they can write to us? I have put up my mobile email ID in the chat box. Email ID. Sharing phone number is very difficult, Yes, yes. so better to connect with the mail ID. Anyone wants to connect with me on any issue, my email ID is there in the chat box. Right. So Yes. So science Raka sir has is also also getting shared. late. You should start with the conclusion Right, right. session. Yeah. Yes, 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 yes. Thank you. So now we come to the end of the technical session, and before we conclude it with a thanks to everyone, may I please invite Dr. Shaheen Ansari from Child Rights and You to deliver the valedictory session and conclude the program. Thank you, Dolphy. And it was really, really very good, webinar. A very important program, very useful for those, for teachers and for people like us who are working with children directly or indirectly. So, how to, understand their emotion, how to work with them, how to listen them, especially as Dr. Ramiz Sahab, shared, he shared different, framework for SEL like Castle, then one framework also which is, MG IEP, Mahatma Gandhi Institute of, Education and Peace, which is run by Education Ministry, which was HRD earlier, and UNESCO. In UNESCO or partnership say they have already launched one SAL. They have also their own framework, and also there is a Harvard framework. So all are almost similar to this. He explained how we can use this framework, and what is most important is when he started, life is not all about number. Actually, this is true. We should not focus on percentage. We should not focus on the number he or she gets. Should focus on his or her emotional development also, because that is how they can grow in life, and in the positive way. And he also explained how SEL is promoted by SDG, RTE, and NEP, that is National Education Policy 2020. NEP में बहुत ही डिटेल में दिया गया है NEP के फर्स्ट टाइम, and it's very important. Dr. Ramesh Saab has shared this thing, and what other thing is important, that they have also offered to help people, those who are interested in them. I am very happy that they have all shared their, he has shared his email address, and so those who want his help, they can help. But what is about Dr. Mudassar Hussain? Mm, uh, Amazing. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाया कि व्हाई SEL is important, why working on psychological aspect is important. Medication is not the solution. लोग होता है दवा दे दो, suppress कर दो, that is not the suppression. And he also showed some how some symptom क्या होता है, कैसे हम पहचाने कि हमारे क्लासरूम में बच्चे जो हैं they are going through some SEL problem या some social psychological problem, how to identify, and why you should make confidentiality of their discussion. वो कैसे आपको चीजें बता देंगे और कैसे उनके साथ रेगुलर आपसे बात करनी है, because as he emphasized that he or she, the person who is facing problem, will not share all the problems in one sitting, in one door. So you have to keep meeting them, keep listening to them, है ना. और उसमें अदर वो जो उन्होंने किया है, आई थिंक वी शुड आल्सो वर्क दिस रिकमेंडेशन और स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, है ना. बाहर के देशों में होता है, एंड हम लोग तो अभी साइकोलॉजिस्ट के पास रिफर करो तो लोग आते हैं कि कोई बीमारी हो गया है क्या, है ना, विच इज नॉट. तो जो सोशल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अगर हर स्कूल में होता है, एंड देयर शुड बी सम साइकोलॉजिस्ट, सो
all the children should visit there, and Sir, they should like just for information, sir, this year we are launching 5 days TOT on mental health and psychosocial care for children in disasters and emergencies. And diet, SCRT, NCRT, and teachers will be an important component for this training. Hopefully by March, April, we will be launching that. so great. So this is very important. So that's why I'm saying Dr. Mudassir's whole, it opens up a different world of child psychology and the problem and how to identify and how to listen. He said he shared some basic things like talk to kids, उनसे बातें करो, है ना, और वो जो यूज करे दिमाग से बाहर निकाल दो. You should not use that word दिमाग. You should talk to them, listen to उनको let them burst, है ना, रोते हैं तो रोने दो, but listen to them. गुस्सा हो रहे हैं तो let them, but listen. Do not discuss what happened to you. मतलब वो उन्होंने कहीं भी कहा कि रिपीट नहीं करना है, मतलब उन्होंने बता दिया आपको, but you should not repeat. अरे क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ. These are the symptoms, these are the problem he said, and he also discussed self harm and suicide. दोनों में बहुत फर्क है, and we should not intermingle. The self harm हो रहा है, उसका बहुत सारे कारण हो सकता है, and he is ready to for further detail. And he said that there is another thing he shared about selective mutism, जो बच्चे शांत हो जाते हैं, बोलते ही नहीं है ना. तो उनका एक तो कारण हो सकता है बचपन से वैसे हो, इंट्रोवर्ट. So that you have to find out through the parents. Otherwise, you have to work on them. Why? And then Dr. Ramesh Saab has shared that how he shared one example how he opened up the one girl who was not speaking and gave the process. So these are the many ways what I could understand with this session, that, and as a takeaway for us also, those who have that SEL is an urgent need of the time. It's most important and most urgent need of the time. It is time to mainstream into education system. ACL को हमें education system में mainstream करने का वक्त आ गया है. It's high time to transform education and shape a future that is graded towards providing peace and humor, not in the numbers. We should human being को पैदा करना है, peaceful person को personality करना है. So for this is high time, and the government of India has already started with UNESCO. I think they have celebrated 10 years of SEL program in India. MGICP, which is Mahatma Gandhi Institute of Peace and Education, and Education Ministry. They have celebrated 10 years, last year. So the government of India has also started working that it needs to be familiarize और क्या कहते हैं उसको और बढ़ाने की जरूरत है. With this, I really like to thank both Ramesh Saab and Datta Saab for such a nice session. Thank you. Over to you, Dolphy. Thank you, sir.